Okay, friends, so welcome on YourPedia, and this one is the session for all of you जिन्होंने गेट एग्जाम लिखा था एंड गेट एग्जाम का रिजल्ट अब निकल गया। गेट 2026 रिजल्ट इज आउट और उस रिजल्ट का एनालिसिस क्या अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल सकती है उसी से रिलेटेड सेशन है। और आप जानते हैं YourPedia इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म विच provides you post gate counseling and guidance, and I believe YourPedia is the only platform which provides you paid post gate guidance. Why I'm focusing on paid? Because ये पूरे एक साल का प्रोसेस होता है, आपका दिसंबर जनवरी तक चलता है, ये अगले सेशन तक। सो आपको अगर गेट आपने लिखा है तो इधर यू आर इन द क्वालिफाइड दिस गेट क्वालिफाइड और यू आर नॉन क्वालिफाइड। सो आप ये दो कैटेगरी में ही हैं, मेजॉरिटी ऑफ यू। आपका ये तो गेट क्वालिफाई हुआ है या गेट आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है। अब वेदर आपका गेट क्वालिफाई हुआ है या गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, आपके पास कुछ क्रेडेंशियल्स हैं जो वी नीड फ्रॉम यू। तो क्या क्रेडेंशियल डिसाइड करेंगे, कौन से क्रेडेंशियल्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या मिलेगा? नंबर 1, आपका गेट स्कोर कितना है। व्हाट इज योर गेट स्कोर? अगर आपका गेट क्वालिफाई हुआ है, या आप ये बोलेंगे कि मेरा कोई स्कोर नहीं है, इधर गेट स्कोर और नो स्कोर, ये दो ही ऑप्शंस हैं। या तो गेट आपका क्वालिफाई हुआ होगा या क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, गेट क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, दिस टू कैटेगरीज। तो अगर क्वालिफाइड है तो स्कोर बताना है, मार्क्स नहीं बताना है, बिकॉज एडमिशंस आपका जहां पे भी होता है स्कोर एक क्राइटेरिया है, उसके बेस पे होता है। दूसरा, आपका सीजीपीए क्या है और परसेंटेज क्या है, दिस ऑल्सो इज रिक्वायर्ड। CGPA or percentage is very important because CGPA or percentage will decide whether you will get MTech research or MS or not, because there are different courses in different institute. There are MTech courses, most of you are aware only about MTech courses. There are MTech research course which is called MS course. There is a direct PhD course after UG, that is your BTech, BE or MSc, you can get into direct PhD. There can be integrated PhD also, MTech and PhD both will be given, so that your CGPA will decide. Third credential will be your category. So we need to know your category also. You are unreserved category, you are OBC category, you are SC, you are ST. So what your category is, that also needs to be seen. तो आपका category क्या है, that also is very important factor. Fourth, obviously you have to tell about your branch. So which branch of science, engineering, humanities you are, you have to tell about that also. So you need to provide these 4 credentials on the basis of which mentors of YourPedia are going to suggest you whether you will get one particular thing or not, whether you will get PSUs or you will get masters, and masters में भी आपको क्या मिलेगा. Now let me tell you a couple of things here, friends. Gate score or no gate score is only 5 to 10% of the thing. बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए before you convert that into selection. I will tell you first the common mistakes which students do. Number 1, students think that gate score only will decide your selection in MTech or PSU. Actually it is not. Gate score एक ticket है, और gate score even if it is not there, then you need to, wherever you want to take admission, there are interviews also which you have to face, and then other than interviews there can be written exam also. So written exam and interview is something which you have to face. Now those who are qualified or those who are not qualified need to tell us these credentials, and then we'll be in position to help you like where you can land up. Now I give you a couple of more things here. Now there will be written exam and interview in many of the courses, written exam and interviews. So if you ask me that how many places you will have written exam or interview, आप मान के चलो कि 20% or 30% of the places where you apply for master's program will have interviews and written exam. Now what are the different kind of options you can get from gate score? So first I tell you about those who are qualified. So those who are qualified can get into PSU. Now for PSU your gate score should be
more than average, it should be higher gate score, and then you get the calls. So there are PSUs which have already come through gate now, and there are PSUs which more will be coming through gate. So PSUs is one criteria. Then there is a higher education. When it comes to higher education, the courses are MTech course, and another course is MS course, which is also called MTech research. This is also called MTech research course or MS course. This is called MS or MTech research course. And then there is a PhD course, or there is a direct PhD course. So these are some of the courses. Most of the students को ये लगता है that course is only MTech. MTech is not the only course, friends. MTech research बहुत बड़ा opportunity है. MTech research course को MS भी बोलते हैं, कई जगह पे इसको MTech research बोलते हैं. I think like IIT Bombay calls it MTech research. IIT Madras calls it MS. So there is MS in IIT Madras. The same thing is called in IIT Bombay as MTech research, and IIC Bangalore also calls it MTech research. The difference is MTech के लिए आपका CGPA may not be very important, लेकिन MTech research के लिए CGPA is also very important. और उसी तरीके से आपका डायरेक्ट PhD के लिए your CGPA and research work is very important. So can I get old IIT even if your gate score is very less? Answer is yes. Even if your gate score is qualified gate score, you can get admission into old IITs also with a scholarship. Can I get admission into IITs if my gate score is not there and I'm not gate qualified? Answer is yes. Even if you are non-qualified, you can get into IIT's system. It is called self-financed system. It is called self-financed, in which you will not get scholarship. But yes, sometime if you get into IIT, अगर आपका गेट स्कोर नहीं है फिर भी आप IIT में चले गए, आपने MTech परस्यू किया, MTech रिसर्च परस्यू करने चले गए, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां पे प्रोफेसर आपको कई बार प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप दे देते हैं, या आपने अगर गेट क्वालिफाई कर लिया 1 साल के बाद तो आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है. लिसन केयरफुली अगेन, अगर आपका गेट क्वालिफाई नहीं है, स्टिल यू वांट टू गेट इनटू IITs और यू वांट टू गेट इनटू रियली गुड कॉलेजेस लाइक बिट्स और IITs, यू कैन गेट देयर, बट आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा. सेल्फ फाइनेंस का जो खर्चा है वो कुछ IITs में तो ओनली ट्यूशन फी होता है जो आपका खर्चा होता है. जैसे IIT मंडी है, IIT मंडी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि आपका गेट क्वालिफाई नहीं भी है तब भी आप MTech रिसर्च कर सकते हैं. MTech रिसर्च कोर्स है, इंटरव्यू देना पड़ेगा आपका वहां पे जाके IIT मंडी में, और अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया तो यू विल गेट सिलेक्टेड. और खर्चा सबसे कम है IIT मंडी में MTech रिसर्च करने का. ऐसे बहुत सा कैंडिडेट आप में से जो MTech करना चाहता है IIT से और वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो IIT मंडी इज द ऑप्शन फॉर यू. उसी तरीके से IIT जोधपुर है जिसमें 4-1 लाख रुपए का खर्चा होता है. IIT हैदराबाद महंगा है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी जितना आ जाता है तो 12-15 लाख IIT हैदराबाद का होता है, और वहां पे IIT हैदराबाद और जोधपुर में आप जाओगे, रिटन एग्जाम भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है. तो क्या मैं विदाउट गेट क्वालिफाइड PSU में जा सकता हूं? उसके लिए आप अलग से एग्जाम लिख लो, जैसे HPCL का एग्जाम अभी निकला हुआ है, आप उसको लिखो. तो बिना गेट के आप PSU में, उन PSU में नहीं जा सकते जिन्होंने गेट क्राइटेरिया रखा है. लेकिन बहुत से PSU ने गेट क्राइटेरिया नहीं रखा है, वो आते रहते हैं एग्जाम, तो आप वो सोच सकते हैं. विदाउट गेट क्या मैं IIT सिस्टम में जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हैं. मैंने आपको 3 नाम बताए हैं IITs के, और एक बताया मैंने आपको बिट्स पिलानी का. तो बिना गेट क्वालिफाई किए आप IIT में और बिट्स प्लानिंग वगैरह में और VIT में, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां जा सकते हैं, लेकिन वो आपका सेल्फ फाइनेंस्ड होगा. अब इसमें जिन कैंडिडेट्स के पास गेट स्कोर नहीं है, उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है रिटन एग्जाम की, अपना रिटन एग्जाम देने की. जैसे बिट्स प्लानिंग में HD का एग्जाम होता है जो मेरे ख्याल से मई में है, और वहां पे स्कॉलरशिप भी मिलता है. बिट्स प्लानिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू विदाउट गेट इफ यू वांट टू गो. अगर गेट है तो स्कॉलरशिप डबल मिलता है, तब भी आप बिट्स में जा सकते हैं, और बिट्स बहुत ही रेप्यूटेड कैंपसेस हैं, यू कैन गो देयर. अदर देन बिट्स, अगर विदाउट गेट है आपके पास, तो IIT मंडी, IIT जोधपुर, IIT हैदराबाद, कुछ NITs हैं, उनमें आप जा सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड मास्टर्स आप कर सकते हैं. अब आते हैं जिनके पास गेट क्वालिफाइड है. अगर गेट स्कोर ज्यादा है तो आप PSU टारगेट करें, और किस कैटेगरी पे, किस स्कोर पे आपको PSU मिलेगा, एट व्हाट स्कोर यू आर गोइंग टू गेट PSU, दैट डिपेंड अपॉन which PSU. Now if I talk about power grid, then power grid ask for very high gate score. Power grid में बहुत ज्यादा gate score चाहिए. But when it comes to Navally Corporation NC, Navally Lignite NLC, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनी रत्न कंपनीज हैं,
महारत्ना नहीं है, तो वहां पे गेट स्कोर कम भी चाहिए। अब तो कोल इंडिया ने अपना एग्जाम अलग से कर लिया, बट कोल इंडिया में भी ले लिया करते थे, या आईओसीएल अपना अलग से एग्जाम कर रहा है, आईओसीएल में बहुत कम गेट स्कोर पे कॉल आता था। तो देयर आर पीएसयूज एंड वी विल कीप ऑन एडवाइजिंग यू पीएसयू बाय पीएसयू। जैसे जैसे पीएसयू आते रहेंगे वी विल कीप ऑन एडवाइजिंग यू दैट फॉर विच पीएसयू यू कैन ट्राई। सो अलग अलग पीएसयू का अलग अलग स्कोर, गेट स्कोर के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड YourPedia mentors will keep on telling you that which PSU you should apply with this particular score. Now with gate qualified, suppose your gate is only at the cutoff, then also you get the opportunity to get the part of old IITs as well as new IITs. And friends, you should explore more options, you should bring more options on table, so that at the end you get couple of option and best option उसमें से आप choose करें. Now I will tell you something about what other options here we can explore. So before I go forward, मेरे इस वीडियो के ऊपर आप ये अपने 4 credential भेज देना, and then after this video I will be providing you the answer of you're on the basis of your credential that where the opportunities lie, कहां पे आप जा सकते हैं। अब मैं एक एक करके आपको थोड़ी सी options suggest करता हूं। So these are the credentials which you can mention these credentials on my this video, and I'll be suggesting you where you can go and what opportunities are there for you. So these credentials you are to provide to me. So I tell you what credentials are. These 4 credentials are, एक तो आपने अपना स्कोर मेरे को बताना है, दूसरा आपने CGPA बताना है, तीसरा आपने कैटेगरी बताना है, व्हाट इज योर कैटेगरी, और चौथा आपने मेरे को ब्रांच बताना है। तो इफ यू टेल मी दीज थिंग्स देन आई विल बी इन पोजीशन टू टेल यू व्हाट योर अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस आर। अब आईआईटीज में, और अगर आपको हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है फ्रेंड्स, तो एक पर्टिकुलर कोर्स है जो स्टूडेंट्स को जिसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर गेट स्कोर, या आपका गेट स्कोर कम भी हो या ना भी हो तब भी आपको चांस उसमें मिलता है। मैं उसके बारे में पहले आपको बताऊंगा। इसको एमएस प्रोग्राम बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है एमटेक रिसर्च। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और स्टूडेंट्स को इसका आइडिया नहीं है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं। एमएस और एमटेक रिसर्च या एमटेक में डिफरेंस क्या है? एमटेक 2 साल का होता है और एमटेक में कुछ कोर्सेज आप ज्यादा करते हैं। एमटेक रिसर्च या एमएस में आप एक्सपेरिमेंटल वर्क या आप एनालिटिकल वर्क ज्यादा करते हैं, कोर्सेज आप कम करते हैं। एमटेक टिपिकली 2 साल का होता है। एमटेक रिसर्च हो सकता है आपका 2 साल से ज्यादा हो, कई जगह पे 2 ही साल है। आई थिंक आईटी कानपुर में 2 ही साल है, कई बार 2-2.5 साल का होता है, 3 साल का भी हो सकता है। आईटी मद्रास में 2.5-3 साल का होता है। तो एमटेक रिसर्च का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप में से जो कैंडिडेट अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, उनको एमटेक रिसर्च पॉजिटिवली करनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन में एमटेक का कंसेप्ट नहीं है, एमएस या एमटेक रिसर्च जिसको बोलते हैं उसी का कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको पेपर पब्लिश करने में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। एमटेक रिसर्च बहुत अच्छा कोर्स है। तो जिन कैंडिडेट के पास नो गेट, जिनके पास गेट स्कोर नहीं है या जिनके पास लो गेट स्कोर है, वो एमटेक रिसर्च के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहां पे आपका सीजीपीए, हाई सीजीपीए चाहिए। एनी सीजीपीए विच इज मोर देन 7.5 इज सपोज्ड टू बी हाई सीजीपीए। तो अगर आपका बीटेक लेवल पे सीजीपीए 7.5 से ऊपर है और आपका गेट स्कोर कम भी है या गेट स्कोर आपके पास नहीं भी है, तो आप एमटेक रिसर्च कर सकते हैं आईआईटी सिस्टम से। और मैं अब आपको बताऊंगा किन किन कैसे कैसे इन आईआईटीज में होता है। लेकिन एक बात आप समझो कि ये जो गेट स्कोर है ये आपको इंटरव्यू कॉल के लिए एक बस आपके क्राइटेरिया है। एमटेक रिसर्च में आपका इंटरव्यू जरूर होता है। तो जहां पे भी एमटेक रिसर्च होगा वहां पे आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपसे पूरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा जो सब्जेक्ट के लिए आप बेसिकली एमटेक करना जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप स्ट्रक्चर्स के सिविल इंजीनियर है, स्ट्रक्चर्स के लिए एमटेक रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो एमटेक जो इंटरव्यू है उसमें स्ट्रक्चर्स में से पूछा जाएगा, जियोटेक में से नहीं पूछा जाएगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और एमटेक रिसर्च आप थर्मल में करना चाहते हैं, तो ओनली थर्मल में से इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे, डिजाइन या प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल से नहीं आएंगे। उसी तरीके से अगर आप सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के हैं और कंट्रोल सिस्टम में जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल सिस्टम से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप किस बैकग्राउंड के हैं उसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। एमटेक रिसर्च के बारे में बहुत कम लोगों को इंफॉर्मेशन है। जैसे आईआईसी बेंगलोर में भी अब 23 मार्च को लास्ट डेट है आईआईसी बेंगलोर में अप्लाई करने की। आईआईसी बेंगलोर में भी एमटेक रिसर्च है।
एमटेक रिसर्च में जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे इंटरव्यू एमटेक के इंटरव्यू से अलग होते हैं। एमटेक में भी इंटरव्यू होते हैं, एमटेक रिसर्च में भी इंटरव्यू होते हैं। एमटेक रिसर्च का जो जहां पे भी आप अप्लाई करोगे वहां पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, वो आपसे आपके ही सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। और आईआईटीज के इंटरव्यू ओनली टेक्निकल होते हैं, ओनली टेक्निकल होते हैं। और वो वन सब्जेक्ट जिसमें आप जाना चाहते हैं या टू सब्जेक्ट्स में से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, पूरे के पूरे इंजीनियरिंग से नहीं पूछते, और वो मैथमेटिक्स भी पूछते हैं। तो टिपिकली एमटेक रिसर्च में आपका इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, अब वो टेक्निकल होता है, एचआर नहीं होता, एक या दो सब्जेक्ट में से पूछा जाता है। जैसे अगर आप डिजाइन के लिए जा रहे हैं तो डिजाइन से ही पूछेगा, थर्मल के लिए जा रहे हैं तो थर्मल से ही पूछेगा, एक या दो या तीन सब्जेक्ट्स में से ज्यादा पूछता है। आपका प्रोजेक्ट, आपका जो बीटेक का प्रोजेक्ट है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपने बीटेक के प्रोजेक्ट को ढंग से कर लेना। और साथ में मैथमेटिक्स में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स हो गया, एक या दो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, यहां से वो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछेगा। तो इंटरव्यू की तैयारी आप साथ साथ करना स्टार्ट कर दो। YourPedia के ऊपर इसके मैराथन वीडियो पढ़े हैं, और इंटरव्यू वो आपसे पूछेगा। कई बार वो आपसे इंटरव्यू के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी वो आपसे मांगता है। तो आपको कई बार एकेडमिक सीवी भी वो आपसे मांगेगा। तो एकेडमिक सीवी आईआईटी हैदराबाद में जरूर मांगते हैं। एकेडमिक सीवी हो गया, एसओपी हो गया, इंटरव्यू हो गया। अगर आपने ये चीजें साथ में कर ली, जो कैंडिडेट तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी नहीं करते तो ऑब्वियसली उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है। आपको तैयारी अपनी ऑन रखनी है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एमटेक रिसर्च या एमएस में आपको चांस मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका गेट स्कोर नहीं है या आपका गेट स्कोर काफी कम है और आप पुरानी आईआईटीज या आईएससीज का पार्ट बनना चाहते हैं, तो ये उसका एक चांस होता है। एमटेक रिसर्च इज बेटर देन एमटेक, ये मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। मैं बहुत से स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन मैंने वीडियो डाले हैं, एंड दिस इज द नोन फैक्ट कि एमटेक रिसर्च एमटेक से अच्छा होता है। स्पेशली आजकल जब कैंपस प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है और आपको स्किल एनहांस अपनी करनी है, अच्छी स्किल के बेस पे ही आप अच्छी स्किल बेस के बेस पे ही आप आगे जा सकते हैं। तो स्किल एनहांसमेंट के चांस यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। तो एमटेक रिसर्च में आप वो स्किल एनहांस कर सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। अब एमटेक रिसर्च में बेसिकली कौन कौन से ब्रांच में एमटेक रिसर्च होता है, तो हर आईआईटी के हर ब्रांच में एमटेक रिसर्च के अपॉर्चुनिटी नहीं होती। एमटेक रिसर्च कुछ ब्रांचेस में होता है, कुछ में नहीं भी होता है, लेकिन ये है कि आपको चांस पक्का मिलेगा। सबसे ज्यादा जो एमटेक रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज है वो आईआईसी बेंगलोर में है। अब एक राउंड होता है जिसको हम कोप राउंड बोलते हैं। ये तो एमटेक के बारे में बात आ गई। एक राउंड होता है कोप राउंड, जिसमें आपके रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं, और वो आपका 1 से लेके 10 राउंड तक होता है। जितना आप अगले राउंड्स में चलते रहोगे उतना ही प्रोबेबिलिटी आपकी सिलेक्शन की बढ़ती चली जाती है। और कोप राउंड में अगर आपको अगले राउंड में जाना है, जिनको स्पॉट राउंड बोलते हैं, एंड में स्पॉट राउंड आपका आता है, तो स्पॉट राउंड में आपकी सिलेक्शन की, आपकी अच्छी चीज मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब शुरू के जो राउंड्स हैं उनमें बहुत अच्छी ऑप्शंस नहीं मिलती हैं, फिर जैसे जैसे आप आगे राउंड में चलते हैं अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर आपको अगले राउंड्स पे जाना है, जैसे एक राउंड पे आप गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे आपने कुछ ले लिया, चौथे पे आपने कुछ ले लिया, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आपको चीजों को रिजेक्ट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, कोप राउंड में ओनली आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड होता है, कि जहां पे भी आपने अप्लाई किया है उसको आपने सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये कोप राउंड में डिसाइड होता है, कोप प्लेटफॉर्म पे डिसाइड होता है, और वो नॉर्मली आपके एमटेक के लिए होते हैं। एमटेक कोर्सेज का रिजल्ट यहां पे कोप राउंड में आता है। अब ध्यान से देखना, मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं। आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो एमटेक रिसर्च या एमएस में अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनको ये बताया जाता है, बहुत से लोग इधर उधर बताते हैं कि एमटेक रिसर्च उतनी अच्छी नहीं है जितनी एमटेक है, जबकि ये रिवर्स है। और आप सोचेंगे कि फिर ऐसा लोग बताते क्यों हैं, क्योंकि लोगों को खुद को उनका आइडिया नहीं होता। ये आपको वही बताएगा जो एमटेक रिसर्च कर रहा है आईआईटी सिस्टम से या एमटेक कर रहा है, वो कैंडिडेट आपको जरूर बोलेगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो आईआईटी में नहीं गया कभी, जिसको आइडिया नहीं है, उसको लिए इसका आइडिया नहीं है, तो वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बता रहा है, और उनको उस चीज का आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट से पूछेंगे एमटेक रिसर्च एमटेक, वो बोलेंगे एमटेक रिसर्च बहुत अच्छी चीज है। अब अगर आपने एमटेक रिसर्च में अप्लाई किया और सपोज आपके पास एमटेक रिसर्च का सिलेक्शन है, आईआईटी मद्रास का आपका सिलेक्शन आपकी जेब में है, आपके पास एक सिलेक्शन है, तो यहां पे आप कोप राउंड में रिस्क ले सकते हैं। आप कोप राउंड में रिस्क ले सकते हैं और आगे चल सकते हैं। और मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो बेस्ट ऑप्शंस मिलती हैं वो लास्ट राउंड्स में मिलती हैं, स्पॉट राउंड में, जो जुलाई में खुलता है। रिजल्ट तो आपके आना स्टार्ट हो जाते हैं मई से, मई जून जुलाई, जुलाई 15 तक भी आपको
अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बहुत अच्छी अच्छी, और वो तभी आप ले सकते हैं जब आप रिस्क लें, और रिस्क आप तभी ले सकते हैं रिजेक्शन का जब आपके हाथ में कुछ हो, और आपके हाथ में जो कुछ होना चाहिए वो एमटेक रिसर्च या एमएस होना चाहिए। अब मैं आपको सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूं ये हिडन ऑप्शंस हैं, ये वो स्ट्रेटजीज हैं जिनसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, इवन इफ यू डू नॉट हैव गेट स्कोर, इवन इफ योर गेट स्कोर इज लो, और इवन इफ यू हैव नॉट qualified gate, you can land up in very good IIT and make very good career and optimize your opportunities or options. I've seen that those students who do not use the next couple of months properly, even they end up getting nothing, because they are not having idea or they have not prepared, and when the call comes of interview they are not prepared. I give you one example. In IIT Madras there is a department called DOMS, Department of Management Studies. There only MS is there, MTech is not there. In Department of Management Studies you only have MS, there is no MTech. And if you want to join Department of Management Studies MS, there is going to be interview, there is going to be statement of purpose, but because you do not know about this, so you do not either write the statement of purpose for this, or you have not prepared for the interview, and you end up not getting DOMS. And I've seen that for very less gate score also people get DOMS, and very high gate scorer also don't get DOMS. So that means you need to know that, okay, to get the best option, gate score is not the only criteria. I need to work on my statement of purpose, I need to work on my BTech project, I need to work on my subjects, I need to prepare for interview, and I need to appear for interview. I give you another example. For the management courses in IIC Bangalore, there is a Masters of Management in IIC Bangalore. For Masters of Management, you need to go for group discussion, and these kind of things you have to do. So group discussion and all are required in IIC Bangalore for Masters of Management course. So if you don't go for group discussion or you don't prepare for that, you may not get Masters of Management. In IIC Bangalore, there is another hidden opportunity. So for my first point was, if your gate score is less, or gate score is not there, or your gate score even if is high, please apply for MTech research or MS courses. Many students avoid interview, but I tell you one thing, friends, if you want to get the best thing, interview will be there, and you should go for the interview. Now interview, either you can go for offline or you can go for online. Online interview means sitting at home, you can appear for the interview. Offline means you have to go there, like you are from Andhra Pradesh, Hyderabad, and you have to go to Mandi, or you have to go to Banaras Hindu University. If the interview is offline, obviously you are going to spend money in traveling, but you should go there, because probability is very high for offline interview selection. If the interview is offline, very less students will reach there, और probability जो जाएगा उसकी probability बहुत ज्यादा होगी interview को pass करने की. So friends, wherever there is an interview, you should certainly go there, and आप उस इंटरव्यू को बेसिकली जहां पे इंटरव्यू होगा आप वहां जाएं, तैयारी करें, और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. आईआईसी बेंगलोर में भी इंटरव्यू होंगे, एमटेक के लिए अलग से होंगे, एमएस के लिए अलग से होंगे. सो आई एम टेलिंग यू पॉइंट वाइज पॉइंट व्हाट यू हैव टू डू. एमटेक रिसर्च और एमएस में पॉजिटिवली यू हैव टू अप्लाई. अगर कोई आपको आपका सीनियर या कोई मेंटर सजेस्ट करता है कि एमटेक रिसर्च में अप्लाई नहीं करना है, एमटेक में करना है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड अप्लाई इट. व्हाई? बिकॉज अगर आपने इसको बाद में नहीं भी चाहिए तो ये आपको रिस्क लेने में कोप राउंड में हेल्प करेगा, and you can go to the 10th round or spot round and you can convert it. Second, apply in those courses where SOP is required, where interview is there, because competition is less. And interview also are of two types: offline interview, online interview. Wherever there is an offline interview, go for the offline interview, because probability of success is very high there. I give you example. For very less gate score or no gate score, let me tell you, IIT Mandi in recently I visited a couple of days back IIT Mandi, and I was told there by professors that IIT Mandi gives opportunity to you to go for MTech research program even if you do not have gate score. So that means you don't have gate score, still you can do MTech research in IIT Mandi. So but there will be interview, and for interview you have to go to IIT Mandi. Now many students think, okay, should we go, shouldn't we go? But if you go for the interview there, the probability that you will get selected is very high. And same is the case for IIT Madras also, IIC Bangalore also. If you go for the interview, you will get selected. That is something which you have to do. Now let me come to the branches in which you have to apply. So which kind of branches you should apply? And now there are two kind of branches. One are called core subjects, another are called interdisciplinary subjects. So core and non-core, core and interdisciplinary.
core and interdisciplinary. Now I give you example. If you're a mechanical engineer, for you mechanical engineering is a core branch, but for mechanical engineer, energy studies is non-core branch. For mechanical engineer, mechanical is core. In this, only mechanical can apply. Only mechanical guy can apply. But here, mechanical can apply, chemical can apply, maybe civil engineer can also apply. So that means a different branch of people can apply in interdisciplinary. Now there's another misconception. First misconception is that MTech research is not good, better than MTech. MTech is better than MTech research, which is wrong. And that this particular misinformation spoils the career of so many of the students because they don't even apply. They keep on waiting for year after year. In fact, many coaching institutes will tell you that a drop, aapka gate score is not sufficient. You should drop, you should wait for some more time. In my opinion, there is no need to take any drop. Right now, career mein gap nahi dalna chahiye aapko. You should not drop. You should just go for IITs. You will get admission. Second misunderstanding is core branches are better than interdisciplinary. That is very, very wrong. It is not true. Especially now because AI, ML and data science has come. AI, ML, data science is in the core also, interdisciplinary also. We are making use of these skills everywhere. So that means placements or job or the opportunities are as per the skills. It is not as per the department. It is not कि opportunities या जो job opportunities हैं मेरे पास या options हैं, they are more in design or thermal or mechanical or energy studies. Answer is, if you get upskill, opportunities are there. So friends, my second point is, if you apply in interdisciplinary departments, that means in which more branches can apply, then the options will be very high, especially for computer science students. Applying in your own branch, because maximum number of students who have written GATE exam are computer science graduates. So computer science mein there are limited branches, computer science, AI, ML, only limited branches. But in the core they are limited. But in the interdisciplinary, you guys are eligible to apply in many branches. So if you are from computer science, your GATE score is less and you want to land up in IIT system, think of interdisciplinary branches in which you are eligible. So if you are eligible in this branch and if you apply in that branch, you will surely get that. So for all of you, interdisciplinary is something in which you should certainly apply. Many people will tell you that core is better than interdisciplinary. I'm telling you this is the reverse. This is the other way around. So first thing people will tell you is that MTech is better than MS, which is wrong. Second, they will tell you core is better than interdisciplinary, which again is wrong. You should not do that. I give you third hidden input. Direct PhD is something which you can think of applying. Direct PhD mein competition is minimum. Professors are not getting students for PhD programs nowadays. So direct PhD means BTech ke baad PhD. Minimum GATE score is required for that, and you can get into direct PhD if you prepare for interview very well. So if you prepare for interview very well, competition is very less, you can get into direct PhD. The moment you get into direct PhD, now direct PhD may be 5-6 years, but now after National Education Policy, NEP 2020, after National Education Policy 2020, you can convert your PhD into masters after a couple of months, after a couple of years. Like 2 years के बाद अगर आपने MTech में courses complete कर लिए हैं, if you have completed your courses, then after 2 years you can convert your PhD into masters. So if you enter into direct PhD, अगर आप direct PhD में चले गए, उस direct PhD में जाने के बाद आपने उसको convert कर लिया, let's say you got it converted into let's say your MTech, you can do that because National Education Policy पहले नहीं होता था, पहले उसका implementation नहीं था. Now there is a implementation and direct PhD can be converted into MTech. So if your competition, if you don't want to fight a lot of competition, that is something which you can do. So this is the another option which you guys can explore. Many of you join masters with the thinking that future में हम PhD करने के लिए जाएंगे, abroad जाएंगे जहां बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छा scholarship मिलता है. So my advice to all of them is, like, you can think of MTech, MS research, you can think of interdisciplinary. These two combination you can think of, MTech, MS research and interdisciplinary. These two will really help you to get into funded PhD positions abroad. वो बहुत अच्छी option आपके पास होगी. Now friends, many of you are seeing that what are the options, what are the
options which will come to us, what would be the options for us. I tell you one thing, like जो भी options अभी आपके पास आएगी, जहां जहां अप्लाई करना होगा वो आपको अप्लाई करना है, लेकिन एप्लीकेशन के बाद, आफ्टर एप्लीकेशन also there is going to be interview, there is going to be written exam. So keep preparing on that line. That is the most common mistake students do. One more tip I will give you here, that is more you apply, more is the probability of your selection. So more you apply in the courses, more the courses you apply, more is the probability of selection. But the point here is how many places we have to apply. More apply means, should we apply in 20 places, 50 places, how many places? Answer is, you should apply more means in one particular IIT 3 to 4 courses mein you have to apply. Now particular IIT mein fee structure may be 300 rupees for application fees, maybe 300 rupees, it can be 1500 rupees, it can be 2000. So you need to invest some money in application. You need to invest some money in the application, and this investment is not going to be waste. We are not saying that you apply in 20 departments, don't do that. Mentors of YourPedia will suggest you then in particular IIT how many places you have to apply. The mentors of YourPedia will suggest you how many places you will be applying in particular IIT. But in my opinion, in one particular IIT, minimum 3 to 4 places you should apply. If you can apply in more, let's say you applied in this department also, that department also, sometime same department के अंदर आपको अलग अलग एप्लीकेशन लगेगा. तो बी मेंटली प्रिपेयर कि आपको इन्वेस्टमेंट पैसे की करनी पड़ेगी. मे बी 5,000, 10,000, 20,000 रुपया आपको एप्लीकेशन पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जगह आप अप्लाई करेंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी और आपका चांस होता है कि आपको ऑप्शंस मिलेंगी. सो ज्यादा अप्लाई करने से ज्यादा कॉल्स आने के चांस होते हैं, ज्यादा कॉल्स आने के बाद आपके ज्यादा कन्वर्शन के भी चांस होते हैं. So you people are to be ready for more applications. And कितनी एप्लीकेशंस आपको करनी पड़ेंगी? एक टिपिकल आईआईटी में मैंने आपको बताया 3-4 से लेके 7-8 अप्लाई आपको करना पड़ेगा. जितना आप कर सकते हैं उतना आपको कन्वर्शन मिलेगा. और अगर आपने 10-15 हजार पे एप्लीकेशंस वगैरह पे लगाया और सारी प्रोसेस में लगाया और आपको एंड में बहुत अच्छी ऑप्शन मिल गई, then this is going to be worth it. Now which courses are the courses which are the best and competition is less? I believe MTech research courses, MS courses in IIT Madras are one of the best courses. There are some hidden opportunities. Like I told you, IIT Mandi mein MTech research program is a hidden opportunities. Very less students are aware about these courses. And if you don't go to these courses, you can really do good in these particular courses. Now I will hand over to Gurvinder sir. I will hand over to Gurvinder sir, and he will suggest you the couple of things here. He will suggest you a couple of things. He will tell you how to proceed forward in couple of things. I'll get back. I'll come back within half an hour, 45 minutes. And then I'll suggest you further how you can proceed further in other things. So, yahan se, so for some time, Gurinder sir will suggest you some more things. And then I'll again tell you about some of the courses which you can apply. So, lot of information which you are getting is important for all of you, and that will help you to strategize. I'll see to your questions जो आपने पूछे हैं. I'll see those questions and I will try to answer all your question. I'll do the analysis of the question you have asked, and I will try to provide the answer for these particular questions. So let me go through all your questions and answer all your these questions. I'll be back within half an hour. Till that time, Govinda sir is going to give you some inputs about this entire process. Yes, good evening, everyone. So let me answer your one by one queries over here. So let me tell you, there are so many students having the query related to the 4 credential.
See, 4 credentials are required to guide anyone. You will be having the most important query. So these are my credentials. Credentials means my gate score is this, my category is this, my branch is this, and my BTech CGPA is this. What can I get? This is your biggest query right now. So answering to this query, let me tell you, there is a procedure. This is a process of 4 to 5 months for this post gate complete process of IITs, NITs, triple IITs with gate, without gate. It is a process of 4 to 5 months. We have to follow some procedure. I can tell you straight away, according to your credentials, whatever you're putting over there, what will you get? Believe me, friends, if I tell you, according to your credentials right now, what will you get? Those are not going to be the best opportunities for you, best options for you. Because opportunities varies year to year, IIT to IIT, department to department, and course to course, opportunities varies. First point. Secondly, it also varies from every year to every year. So what will you get? For that, we need to follow some procedure. And this is a process of 4 to 5 months, as I already told you. And the very first step, the very first step is the most important step, that where you should apply. Answering to this query, that where you should apply, we have to apply at a right combination. Combination means whenever you are applying for any particular IIT, whatever branch you are having, so let us suppose you are from mechanical branch, and let us suppose you are applying for, let us suppose, IIT Madras. So once you are applying for IIT Madras, so you will be having the courses. MTech is there, MS is there, direct PhD is there. I'm assuming you are the BTech candidate. So after that, after the course, then comes the department. Being the mechanical engineer, you are eligible to apply for multiple departments. Being the mechanical, you are eligible for mechanical department. Being the mechanical, you are eligible for interdisciplinary departments. Being the mechanical branch, you are eligible for the mathematics or the computer science department. Similarly, for the management department. So these are the departments. Now, after that, there comes the specialization. So in IIT Madras, MTech branch, MTech course, mechanical branch, you will be having multiple specializations to apply over there. Like you are eligible for thermal, fluid, production, material science. So specializations are there. Similarly, in the interdisciplinary domain also, you will have the multiple, again, specializations where you can apply. Let us suppose ocean technology, let us suppose aerospace. There are so many other specializations are there under one particular department. So likewise, being whatever credentials you are having, so according to your credentials, you will be having multiple permutation combinations to apply. Because in same department, in same specialization, you can apply for the MS. Let us suppose for all. So roughly 40, 50 various permutation combinations will be there where you can apply, being the mechanical branch student, having some credentials and get qualified. But where exactly you have to apply, that matters. So this is I'm just talking about, and this is the most important step, because if you have done this very first step wrong, then you may lose very good opportunities, what you could have got at the end of 4 to 5 months. So when you are applying for any particular IT, so with which combination you should apply? IT, course, department, specialization. This combination should be right. If this combination is right, then you may having chances to get multiple calls for the next round. Let us suppose for the MS or for the MTech. Because in some of the department, for MS, you will be having the interviews everywhere. Interview will be there. In some of the MS program, you have to apply for the statement of purpose also. In IIT Madras, for all the MS courses, you have to apply for the research proposal also there. So once you got the call, convert those calls into the selection. In the end, come up with the multiple selections. Sir, in the COP round 1, I'm getting these 3 options I'm getting. So what I do over here? Sir, in the direct, because MS results you are not going to get on the COP portal. MS result or MTech research is also, it is called in some of the IITs, and the direct PhD results you are not going to get on the COP portal. COP portal only for the MTech programs. So parallel MS result will also coming over there. And recently we have put one video also there for one of the candidate. In the end, he got one message. If you saw the thumbnail of any of our post-grad guidance selection candidate from the last years, in the thumbnail, we put some message over there. There was one student where it is in the thumbnail, this thumbnail it was mentioned, MS selection gave me opportunity to go till the 10th round. अब सीओपी में क्या प्रोसेस होता है कि जितना आप नीचे जाते हो राउंड्स में आगे जाते हैं, स्पेशली अगर आपका गेट स्कोर एवरेज है या बिलो एवरेज है या लो गेट स्कोर है, देन आपको बहुत नीचे तक जाना होता है सो दैट कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले. सी
this is the process where in the end you want one best click. That is the only important point. You only want one best opportunity in the end, only one you want. But for that, we have to apply roughly 100, 150 places for various IITs. But I want only one best option. That is the most important point. This is the process for 4 to 5 months. This is I'm just explaining you. First 1.5 months will go directly for your form application. Each and IIT wise, you have to apply very cautiously. So, sir, can we apply at so many places in particular IIT for so many department specialization? Yes, you can apply. That is not an issue. But there is a money involved also, right? So, whenever you are applying for any particular IIT, you have to apply. Application fees is there. So we do not want money to be wasted, your money to be wasted. So apply very cautiously. YourPedia mentors team is going to guide you that according to your these credentials, each and every IT wise, with which combination you should apply, such that you come up with the multiple opportunities in the next round, convert those opportunities into the selection, and in the end, come on the table. Sir, I am having these 4 selections. Now tell me which is best from me. Now there is one doubt comes in the student mind. Sir, I'm having this interest. Majority of the computer science candidate want to do masters in the AI courses, data science, computer science, cyber security. Majority of the electronics people want VLSI, semiconductor, integrated circuits. Majority of the people want this thing. Now, seats are limited for particular IT, for particular this specialization, seats are limited. Everybody can get, no, everybody cannot get. So my credentials are on the lower side. My credentials are not that good that I will get called for the VLSI or for the data science or for the AI domain. Now what I do, should I apply for these department specialization considering I will not get the call, or I apply for for that particular same IT, I apply for, let us suppose, geoinformatics or ocean technology, or let us suppose this Sitara is also there in IT Bombay. Each and every IT is having the different courses. E-vehicles are there. E-waste managements are there. Are so many courses available over there. Now, where you should apply according to my interest or according to my credentials, we have to make the balance for that. Here, the role comes for the mentor. Mentor having that vast experience, they will tell you exactly where you should apply, how you should apply, how to write the SOPs. AI is not going to help you to write the SOPs because you will be totally out. They have clearly given the instructions. Some of the IITs clearly given the instructions. If you're making your research proposals or these SOPs through using the AI, you will directly get rejected. So उसमें अब आपको कैसे करना है, कैसे लिखना है सारी चीजें, अगले राउंड्स में कैसे प्रोसीड करना है, कैसे डिसीजंस लेना है, ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं वो जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. So let's follow the procedure. Post-gate counseling guidance has already been launched. Google form is being floated in the this chat box of this live chat. This is already there. Now, if you ask me again, I'm going to take your queries one by one also. See, whatever queries you are putting over here, sir, what are my chances? What can I get? What is the possibility of this? What is the possibility of this? Like somebody is writing over there, sir, my all India rank is 502. Manvit Reddy is there. Sir, my all India rank is 502. Score 671 in GATE DA. I'm in third year. Can I get good admission next year? CGPA now in 9. Yes, Manvi, you will be having a very good opportunity. Your score is, your all India rank is 502, 671 GATE score. Now, right now you are in the third year. Try to get better in the next year. Although 671, 9 CGPA, EWS category, you are going to get a very good opportunity. Branch AI, as you are going to apply next year, then definitely my suggestion is write GATE again next year, and then the best one we will use. AI, if not for all the ITs, but yes, some of the ITs you are certainly going to get Manvi for that. Agriculture 31 rank 624, which PSU and IT, sir? See, majority of the I would say that the core branches like mechanical, civil, electronics, electrical, computer science, chemical, these branches having sufficient opportunities for the I'm going to discuss about the branches like this petrochemical is there, let us suppose this agriculture is there, food tech is there, textile is there. So in the last, I think 2 years before, IT, this NITI Bombay, there was one institute which offers you PGDM course. Now it has been converted into the IIM Bombay. They offer PGDM course. 3 courses होते थे वहाँ पे, project management, industrial management, and sustainable management. So majority of the you guys, जिसका ये branch है, agriculture, textile, this food tech, तो आपका सबसे पहला जो priority होता था वो management courses होता था.
So now what I'm just going to tell you, that if you are not from these engineering branches, mechanical, civil, EC, electrical, computer science, or this chemical, and you want to apply for the very good courses over there, management courses are the best courses for you. IT Madras, Department of Management Studies, IT Madras, IU or IT Bombay is there, Masters of Management, IC Bangalore is there. If you are having score 500 plus grade score, CGPA good for MS courses is also there, MTech courses are also there, direct PhD courses are also there, management courses are there. In each and every ITs, each and every NITs, management courses are there, where the placements are very, very good. Very, very good placements are there. Soon you are going to get so many videos related to that also, about management courses in various ITs and NITs. Soon you are going to get those videos also. The students which are studying over there, what they are telling about the courses and what they are telling you about the placement, everything. आजकल वही इंटरेक्शन चल रहा है. और if you are in regular touch on the YourPedia platform, तो आपको दिख रहा होगा वहां पे हम रेगुलर बेस पे कोई ना कोई इंटरेक्शन डाल रहे हैं. लाइक क्रायोजेनिक्स के बारे में डाल दिया, या आपका ऑप्टिक्स के बारे में डाल दिया, जिससे आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है और उससे आप आइडिया भी लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आईटी दिल्ली में दिस ऑप्टिकल्स एक ब्रांच है, एक स्टूडेंट को मिला एमटेक. अब आप जानना चाहते हो कि इसमें प्लेसमेंट कैसा है, क्या क्या इसमें कोर्स करिकुलम वगैरह है, तो आप उन वीडियोस को जरूर सुनिए. उसका आपको डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलता है, उसका आपको बेनिफिट मिलता है. सर 140 EC 808 स्कोर किस आईटी में मिलेगा VLSI? सौरभ भट्टाचार्य, टेल मी योर CGPA also and your category also. 800 plus grade score, Saurabh, you have to apply for each and every IT for VLSI domain, for semiconductor devices, for solid state, because these are all जो है मिलती जुलती ब्रांचेस हैं, तो इसमें आप जरूर अप्लाई करिए. ऑलमोस्ट ऑल आईटीज में आपका अपॉर्चुनिटी बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं. लेट अस सपोज यू अप्लाई फॉर ऑल द आईटीज, सौरभ भट्टाचार्य, for this VLSI domain for all ITs. Let us suppose you got something in the round 1 of COP and not for your choice of IT. जैसे आप चाहोगे कि मेरे को IT मद्रास मिल जाए या बॉम्बे मिल जाए, दिल्ली मिल जाए VLSI के अंदर, तो अगर सपोज राउंड 1 में नहीं मिला तो मेरे को राउंड 2 में जाना है. जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, देखो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ना एक्सपीरियंस काउंट आता है मेंटर्स का, कि अगर मेरा स्कोर क्या है, मेरे को किस राउंड तक जाना है, मेरे को बेस्ट क्या मिल सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज. तो ये जब आप काउंसलिंग के टाइम पे मेंटर से जब आप डिस्कशन करते हैं, रेगुलर डिस्कशन जब आप करते हैं, तो मेंटर्स आपको बताते हैं कि आपको किस किस राउंड तक आगे जो है वो प्रोसीड करना है. तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है तुम्हारे लिए सौरभ भट्टाचार्य, यू कैन प्रोसीड विद दैट. नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू टेक ऑफ प्रिंस सक्सेना. सर 420 CSC OBC NIT expect sir. See, let me tell you the NIT process. And see, NIT process is very, very simple. Very, very simple. You have to put one preference order over there and then wait and watch. That's it. You have to put one preference order there and wait and watch. NIT के केस में एक स्टूडेंट गलती क्या करता है या मिस्टेक क्या करता है जो आपको अवॉइड करना है, जब आप प्रेफरेंस ऑर्डर का लिस्ट बनाएंगे, वहां पे कोई भी ऐसी ऑप्शन मत रखना कि जो आपको मिल जाए और आप बोलो कि नहीं मेरे को तो ज्वाइन करना ही नहीं है. आपने उसमें सिर्फ वही ऑप्शंस रखनी है जो आपको लगे कि यस, अगर मेरे को किसी भी राउंड में मिल गया, किसी भी स्टेज में मिल गया, आई एम गोइंग टू ज्वाइन फॉर दैट. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है NIT केस में. यहीं पे ब्लंडर करते हैं स्टूडेंट, यहीं पे जो है वो आप लोग मिस्टेक करते हैं. So, Prince, yes, मेरा एक सजेशन आपको ये भी है, especially the computer science candidates, if your score is below 500, let us suppose, and if you're from general category and having, let us suppose, CGPA less than 7, 7.5, do apply for the multiple without gate opportunities, self-sponsored opportunities. Do apply for that, do explore for that. IT, District IT Hyderabad, IT Hyderabad, IT Jodhpur, BITS Pilani, we just visited. Soon you are going to get videos on that also. All information about the HD examination. PGEE, Triple IT Hyderabad, VIT is also there, right? And so many NITs in the end come with the without gate opportunity, self-sponsored opportunity. देखो पेशेंस वाली गेम है, 4 से 5 महीने का, जैसे मैंने बोला, पेशेंस रखना पड़ेगा. स्टूडेंट्स अभी मेरे को कॉल्स ही आ रहा है, मेरे को सिर्फ यही जानने का कोशिश करेंगे, मेरे को कॉल करेंगे, यू आर गोइंग टू गिव मी अ कॉल, सर these are my credentials, please tell me what can I get. See, immediately I already told you, अगर if you want the best opportunity, best option, let us follow some procedure. Let us follow some procedure, and which is a process of 4 to 5 months. Let's follow that. Certainly, in the end, you are going to get the best opportunity, best option for that. But you need to follow. You have to listen to the mentors. Whatever mentors are going to tell you, you have to listen to that. Because this is a blunder mistake you will do. Students normally do. They join the post-gate guidance and they listen to them. Sir, I want VLSI, let us suppose, but your score is not that good for any particular IT to apply for the VLSI. Mentor will tell you to don't apply for the VLSI. You're not going to get the call. You're going to waste the opportunity also. You're going to waste the money also. Instead of that, apply for this particular IT, this particular course. You will get the call.
So if you want VLSI, apply for other IT, this particular IT, there you are having the chances to get the call. In the end, let us suppose you got both the things. Let us suppose you got IT Dhanbad VLSI versus let us suppose you got IT Bombay Energy. Let us suppose. Now in the end, until or unless you don't have the selections in your hand, friends, you cannot make the call. You cannot make the call. Now if you are putting constraints at the very beginning, sir, I want only VLSI, sir, I want only top IT, sir, I only want MTech. Believe me, friends, you are losing so many very good opportunities. This decision we have to take in the end. In the end only we have to take this decision which one to join once you have the selections in your hand. This is a very, very important crux I am just telling you of the next 4 to 5 months, but you need to follow. Postgrad counseling is already being launched. Mentor from tomorrow, mentors are starting taking your this Zoom sessions also. Zoom sessions will be there, one-to-one sessions will be there, starting doing that, and just start taking the guidance from the mentors. Next is sir 567 EWS CSC koi IT. Yes Deepak, it will depend upon your CGPA also, and if you are listening to the mentor, 500 plus gate score in computer science ITs, you are going to get multiple calls. That I'm just telling you, but you have to listen to the mentors. Now if you will put the constraint for that, sir, I want, immediately I say this thing that 500 plus gate score, you are having chances for IT. Now you will put the constraint. सर क्या मेरे डाटा साइंस के चांसेस हैं, सर क्या मेरे एआई के चांसेस हैं, सर क्या मेरे इसके चांसेस हैं. Now once you start putting the constraint, then there you make the mistakes. कि इस चीज को मेंटर के ऊपर छोड़ दो कि जैसे जैसे मेंटर आपको बताएंगे कि आपको ये चीज करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, बस आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है. और इन द एंड स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर स्टार्टिंग में मैंने सोचा भी नहीं था कि एट 400 गेट स्कोर कंप्यूटर साइंस, सून आई एम गोइंग टू पुट वन वीडियो ऑन दैट. 400 gate score computer science student got IT. Now which course, which department, soon you are going to get that information also, right? So what is next? Let us take next query. Piyush Jain, score 750, CGPA 7.47 till 7th semester, category EWS, CAT IT. Yes Piyush, multiple opportunities you are having, multiple options you will be having in some ITs interdisciplinary, in some ITs core branches, but which exactly you should apply, that mentors are going to tell you. That is very, very good option for you. Piyush Jain, you can proceed for that, no issues. 446 CS SC category 7.4 Arkam Mandal. Yes MSR IT. Yes, देखिए एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, मैं फिर से ये बोलूंगा, आप ये जो मेरे को भी क्रेडेंशियल लिख रहे हैं ना, और आप मेरे को पूछ रहे हैं सर पॉसिबिलिटी इन CSE IT MSR. See, this varies from IT to IT. I'm repeating this process. Process is, first of all, we have to apply at a right combination. Combination means IT, course, department, specialization. This combination should be right when you are applying for any particular IT. Now, apply with the right combination. And this combination is not same for all the ITs. Listen me very carefully, friends. This combination is not same for all the ITs. This combination also varies from IT to IT. Because each and every ITs, each and every course, each and every department having different opportunities, chances, not opportunity, chances. हर IT के, हर कोर्स के, हर डिपार्टमेंट के, हर स्पेशलाइजेशन के, हर IT वाइज अलग अलग चांसेस होते हैं. तो वो चांस कहाँ पे लेना है, कहाँ पे रिस्क लेना है, वो मेंटर आपको बताएगा. हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी. अगर मैं नर्सरी में आपको बताऊं, whatever credential you are having, आप सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर है. बट पॉइंट वही आता है कि इफ यू फॉलो द राइट प्रोसीजर, इफ यू फॉलो द राइट प्रोसेस फॉर दैट, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, हर किसी के लिए ऑप्शन है यहाँ पे. नेक्स्ट इज कॉमेडी टूल्स 47 इन मैकेनिकल जनरल 596 स्कोर. आपने यहाँ पे कॉमेडी आपने ये नहीं बताया कि आपका CGPA कितना है. अदरवाइज मैकेनिकल में 500, 550 प्लस, 400, 450 प्लस स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है. हर किसी को कुछ ना कुछ मिलता है, IIT मिलता है, यस मिलता है. मैकेनिकल में तो वैसे ही इस टाइम पे जो है, इन कंपैरिजन टू इफ यू गो बैक 5-7 इयर्स, मैकेनिकल में तो कंपटीशन इस टाइम पे मिनिमम पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने इस टाइम पे मिनिमम है. इन कंटेक्स्ट, तो मैं किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करते हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसमें क्वालिफाई करते हैं, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट के कितना स्कोर आता है.
60 प्लस स्कोर लेने वाले कितने मार्क्स है स्टूडेंट्स हैं, 50 प्लस लेने वाले कितने हैं, 40 प्लस लेने वाले कितने हैं, 30 से कम लेने वाले कितने हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है 60 to 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो गेट क्वालिफाई कर रहे हैं उसके मार्क्स 30-35 से लेस हैं। चेक द डाटा, चेक द स्टैट जो लास्ट ईयर जो पिछले 3-4 साल से आईटीज आईसी बेंगलोर प्रोवाइड कर रहा है। आफ्टर द रिजल्ट यू विल गेट वन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। लास्ट ईयर आल्सो आईटी रुड़की प्रोवाइडेड, उससे पहले भी आईसी बेंगलोर ने प्रोवाइड किया, उससे पहले भी आईटी ने प्रोवाइड किया था। द स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट रिलीज्ड एट द दिस गेट के रिजल्ट आने के बाद आपको जो रिलीज होता है बड़ा ब्यूटीफुल है, वो बड़ा अच्छा स्टैट्स है। अगर तुम उसको भी ढंग से एनालिसिस करोगे ना कि लेट अस सपोज सर आई गॉट 1502 ऑल इंडिया रैंक इन मैकेनिकल, लेट अस सपोज आई एम फ्रॉम ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, सो मैं ओबीसी एनसीएल में मैं किस रैंक पे लाई कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आंसर आज से 4 से 5 साल पहले नहीं मिलता था, 4 साल पहले नहीं मिलता था। नाउ यू आर गेटिंग दैट, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मिलता है। ये बहुत हेल्प करता है आपको स्पेशली फॉर द आईटी दिस पब्लिक सेक्टर के अप्लाई करने के लिए। पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करने के लिए आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है और उसी के बेस पे YourPedia भी आपको गाइड करता है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, नहीं है अप्लाई करना चाहिए, कौन से पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करना चाहिए, वो सारा मेंटर्स आपको जो है वो गाइड करते हैं। नेक्स्ट इज शीरा श्रीनिवास, इलेक्ट्रिकल 442, इंस्ट्रूमेंटेशन 453, जनरल कैटेगरी 7.8। यस श्रीनिवास, Shira Srinivas. So yes, Srinivas, you will be having the opportunities, you will be having the option, but again, same thing to everyone. Apply with the right combination. Listen to the mentors. What mentors are going to tell you that each and every IT wise where you should apply, how you should apply. NITs are also giving you very good selections over there. Let me discuss you one case. Last year in 2024, there was one girl. I don't remember the name of the girl. She got NIT Kurukshetra without gate, self-sponsored. Although she was also gate qualified, लेकिन उसको गेट क्वालिफाई के बेस पे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बन रहा था. Then she choose this NIT Kurukshetra VLSI MTech domain self-sponsored. In the end, she got the package of 25 lakh. So this is, क्योंकि ये मैं वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको मैं बार-बार कि शुरू में at the very beginning don't put any constraint. At the very beginning don't put any constraint. कोई शुरू में कंस्ट्रेंट मत लगाना. जैसे जैसे आपको मेंटर बताएगा पोस्ट गेट काउंसलिंग में, कल से जिसके सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे आपको मेंटर बताएंगे आपने बस उसको सुनना है. एट द वेरी बिगिनिंग कुछ मत सोचो यार कि मेरे को जाना है नहीं जाना है, क्योंकि मेंटर आपको जो बताएगा अप्लाई करने के लिए वो आपके क्रेडेंशियल के अकॉर्डिंगली है कि आपको अपने क्रेडेंशियल के अकॉर्डिंगली मेरे को कहां पे अप्लाई करना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट और वही चीज ज्यादा मैटर करती है. आपने उसकी मेंटर की बात सुननी है, जैसे जैसे आपको बोलेगा वैसे प्रोसीड करना है. In the end, once you will be having the multiple selections in your hand, then only we are in a better position to decide which one to join. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने तुम्हें बताई है. यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, यहीं पे सबसे ज्यादा ब्लंडर आप लोग करते हो कि जब तुम कंस्ट्रेंट स्टार्टिंग में लगाना स्टार्ट करते हो. डोंट पुट एनी कंस्ट्रेंट इन द वेरी बिगिनिंग. कंस्ट्रेंट एंड में लगाएंगे जब आपके हाथ में मल्टीपल सिलेक्शंस आ जाएगा. हाँ, सिविल का एक क्वेरी लेते हैं. आर्या, gate score 366, civil, OBC, any NIT or IT. See, NIT, you are certainly you are going to get NIT at this particular score. पिछली बार जितने भी पोस्ट गेट में सिविल के स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन किए थे, everyone got IT, everyone got IT. हम लोग उनकी इंटरेक्शंस करके अभी वीडियोस भी डाल रहे हैं और बहुत जल्द आपको कम्युनिटी की फॉर्म में पोस्ट भी नजर में आना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट थे, कहां सिलेक्शन हुआ, वो सारा इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द हम लोग जो है यूट्यूब में एज ए कम्युनिटी पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. यस आर्या, 366 सिविल OBC, यस NIT you certainly you are going to get, but about the IIT you should try for the self sponsored also and some new IITs, there are some courses in IITs also जहां पे तुम्हें कॉल आने के चांसेस हैं. वो आपको बताएंगे सिविल के मेंटर कि आपको उसके लिए एग्जैक्टली कहां पे किस स्कोर पे आपको अप्लाई करना चाहिए. ऑल इंडिया रैंक 29 एनवायरमेंटल साइंस, एनी IIT पॉसिबल. Rajdeep 4120. Tell me your gate score, CGPA, and your category. Rajdeep, All India rank 29. Then I am taking next CSE score ET011 H3G. CSE score 506 General Delhi. I don't know why you put Delhi over here. That you have put Delhi over there क्योंकि इसलिए आपने कुछ लिखा है कि आपको दिल्ली IIT दिल्ली का मेरे से आप पूछ रहे हैं या किस पर्पस से लिखा है. मेरे को CGPA भी बताइए क्योंकि बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं.
एक हाई असिस्टेंटशिप का भी एक ऑप्शन होता है आईटी दिल्ली के अंदर, उसमें भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं, ऑप्शन बहुत सारी हैं, बस आपको जैसे जैसे मेंटर्स बताएंगे आपने वैसे वैसे करना है। यू हैव टू लिसन टू द मेंटर्स। नेक्स्ट आई एम टेकिंग ET011 CSC 506 जनरल CGP 8.0. Yes, ET, yes, you are having chances. 8 score, 8. I already generalized this thing. If anybody from computer science, 500 plus gate score you are getting, you are from general category. और अगर आपका 8 प्लस CGPA है तो MS की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए वेट कर रही है। आप उसको मेंटर से डिस्कस करना स्टार्ट करें कि मेरे को किस किस आईटी में कहां कहां पे अप्लाई करना चाहिए। मेंटर से आप डिस्कशन करना स्टार्ट करिए। गेट एक्सी रैंक 205 तरुण, गेट एक्सी रैंक 205, स्कोर 595, ओबीसी एनसीएल। यस, वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारा तरुण। देखो एक्सी स्कोर का एक एडवांटेज ये भी होता है कि एक तो जिस डोमेन में तुम लोग जो से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो एक्सी के अंदर, उसमें तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। इंटरडिसिप्लिनरी के लिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप लोग रेगुलरली फॉलो करते हो YourPedia की वीडियोस को, if you are not looking for the public sector, let us suppose, and if you are looking for the especially the interdisciplinary domains, apply with the XC, especially the mechanical students, civil students, other branches student, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी में देयर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स है। एनर्जी में हर आईटी के अंदर, जितने भी आईटीज के अंदर एनर्जी है, वहां पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। सी, अब आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है। देखो दो तरीके हैं अब इसके बाद डिसाइड करने के कि मेरे को किस डोमेन में जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। दो तरीके हैं। पहला एक तो फैक्टर यही है कि मेरा क्या क्रेडेंशियल्स हैं और मेरा इंटरेस्ट किस डोमेन में है। सेकंड, हमें ये भी एक चीज देखनी है कि फ्यूचर किस में है, फ्यूचर किस डोमेन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो देखने का नजरिया है इंटरेस्ट, दूसरा देखने का नजरिया है फ्यूचर, कि किसमें फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज है। लाइक VLSI, एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट VLSI, AI, डेटा साइंस, सबको पता है कि इसमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। देयर आर सो मेनी अदर डोमेन्स आल्सो। सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एनर्जी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है, एरोस्पेस इसमें तो अपॉर्चुनिटीज कभी कम हुई नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे डोमेन्स हैं, ई व्हीकल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट, दिस मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ओशियन टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटीज है, जहां पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है और वो तुम्हें लो स्कोर पे मिल जाता है। और क्यों वो लो स्कोर पे मिल जाता है? क्योंकि बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल बना हुआ है दिमाग के अंदर कि नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं पता क्या है, पता है नहीं आपको कोर्स के बारे में कि ओशियन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस का क्या रोल है, नहीं पता आप लोगों को, लेकिन इसी रीजन से तुमने अप्लाई भी नहीं करना है। ऐसा नहीं होता यार, ऐसे बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस होती हैं और हर साल हर आईटीज के अंदर कुछ ना कुछ आईटीज के अंदर न्यू कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। अब एक चीज दिमाग लगा के सोच के बताना, इफ एनी पर्टिकुलर IIT और NIT स्टार्टिंग न्यू कोर्स, कोई भी नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, व्हाई दे आर स्टार्टिंग, सोच के देखो यार, व्हाई दे आर स्टार्टिंग। आईटी कानपुर 2 साल पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक नया कोर्स स्टार्ट किया। पिछले साल व्हेन वी वर इन द आईटी कानपुर, फ्रॉम देयर ओनली वी लॉन्च द पोस्ट ग्रेड गाइडेंस मॉड्यूल। आई वाज हैविंग इंटरेक्शन विद त्रिपाठी सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर दिस सस्टेनेबिलिटी। उन्होंने मेरे को बताया वी आर स्टार्टिंग न्यू कोर्स सस्टेनेबिलिटी थ्रू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये नया कोर्स है, यही तो फ्यूचर है यार। अब ऐसे डोमेन्स हमें आइडेंटिफाई करनी है, वो मेंटर्स, क्योंकि YourPedia इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो मेरे को लगता है कि जो AI को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, चाहे वो कंटेंट डेवलपमेंट को लेके ले लीजिए, किसी भी डोमेन को ले लीजिए, हम लोग AI का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो है फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर देखा जाए तो किस डोमेन में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके लिए जो है वो आपको मेंटर्स को सुनना है। मेंटर को सारा अवेयरनेस है, बिकॉज वी कीप ऑन विजिटिंग वेरियस IITs, NITs, ट्रिपल IITs, बिट्स, हम लोग ये विजिट करते हैं, हमें इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और देखिए किस तरीके का रिसर्च यहाँ पे चल रहा है। जैसे अभी हम लोग IIT मंडी अभी हमने विजिट किया है, इससे पहले भी बिट्स SD विजिट किया, बिट्स पिलानी हमने विजिट किया। तो लास्ट ईयर IIT कानपुर, IIT रोपड़, IIT हैदराबाद, IIT गांधीनगर, वी विजिटेड दैट। तो वहां से बहुत इनसाइड इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ओनली उस पर्टिकुलर IIT के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो जेनरिक में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो उसी के बेसिस पे मेंटर जो है आपको कंटिन्यूअसली गाइड भी करते हैं। सर ओनली रिजल्ट आया है, स्कोर कार्ड जैसे एवरी ईयर आता है, कैसे डाउनलोड होगा? सुब्रमण्यम बेहरा, यस, स्कोर कार्ड के लिए आपको अलग से लिंक मिलेगा, जो कुछ दिनों के बाद, मे बी 4-5 डेज के बाद नॉर्मली
22-23 के आसपास जो है आप लोगों को डेट जरूर मेंशन होगा व्हेन यू विल बी एबल टू डाउनलोड द गेट स्कोर कार्ड, क्योंकि बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट टू अप्लाई फॉर द COP, पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए चाहिए, एंड दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द वेरियस ITs में फॉर्म में अप्लाई करने चाहिए के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट इज साई किरण. सर आई हैव स्कोर्ड 36 गेट EC, CGPA 9.21, गेट स्कोर 471, EWS, any VLSI option in MTech from IT or NIT. Sai Kiran, very less chances for VLSI. If you want to go for the VLSI, apply for the self-sponsored program, or otherwise at these credential, yes, NITs you are having the opportunities, some department you will be having, but if you are interested for the ITs, then direct PhD is the option where you are having chances, but with which combination you should apply, that which IT, which course is direct PhD, which department, which specialization you should apply, such that you get the call for the next round. And next round is the interview for the direct PhD and for the MS program. You will be having the opportunities. Sai Kiran, you can try for that. Start interaction with the दुष्यंत सर, उनके साथ अपना इंटरेक्शन स्टार्ट कर दीजिए. ऑप्शन तुम्हें बताएंगे सारा कि किस तरीके का बनेगा. नेक्स्ट इज गौरव पुनिया, 516 स्कोर, OBC CSE IT का चांस है. यस गौरव, last year at 400 gate score, student got IT in computer science branch. Soon I'm going to release that video also. Next is Moria Sahni, electrical में gate score 776, rank is 116, number 64. क्या PSU में जाएगा कैटेगरी OBC? Yes Moria, electrical OBC. I'm not getting that. What is your rank? 116 है, number 64. I don't know. अच्छा, number 64 है. Yes, 116. Yes, Moria, you should apply for power grid. Power, अगर आपका 116 रैंक है, और क्योंकि पावर ग्रिड में 5 टाइम्स भी अगर बुलाते हैं, और इलेक्ट्रिकल के लिए काफी ज्यादा वैकेंसीज इसके अंदर आता है. मोरिया, मेरे को लगता है जितने भी पब्लिक सेक्टर में आप अप्लाई करेंगे, सडनली यू आर गोइंग टू गेट द कॉल फ्रॉम देयर. मोरिया साहनी, yes, you are having the option, you should apply. Next is Lakshya Madan, sir, 580 electronics general, 500 plus gate score in electronics branch, very good opportunities, very good opportunity, whatever CGPA you are having. 500 plus gate score electronics branch mechanical branch, बड़ा अच्छा ऑप्शन मिलता है. मींस 500 इज इक्विवेलेंट टू 700 गेट स्कोर, अगर आप इसको कंपैरिजन करें पिछले 4-5 साल से बाद, तो इतना होता है वहां पे. Next is interview preparation is included for MS in PGC. Yes, interview preparation. Let me summarize this thing, Piyush Jain. In the next 4 to 5 months, in the process of next 4 to 5 months, whatever is required, where you apply, how you apply, SOPs, SORs, LORs, ITs, NITs, triple ITs, COAPs, CCMP, interview with the gate, without gate, summer session, winter session, whatever is required in the next winter session and summer session, everything is included in this, and in a very simple way and in a very crystal clear manner, all details are mentioned on the website, so you can directly go there and you can join. Piyush Jain. Next is gate score 643, 128 rank chemical. Yes, Abhishek Sharma, you should apply for various public sector if you are interested for that. Higher studies is the one thing, but public sector, yes, definitely you should apply if you are interested for that. Abhishek Sharma, you will be having the option. And for the chemical branch, there are so many public sector which are recruiting without gate. IOCL also quit from the this public sector, this gate recruitment. IOCL ने quit कर दिया है. SPCL already the process is going on. Then RCFL is there, NFL is there. All the refinery domain, all the chemical domains, public sector, उसमें chemical का recruitment होता है. So you can target that. You can also apply for that. Next is सर 41 मार्क्स आए हैं गेट CSC में 8900, रैंक है, क्या कुछ मिल सकता है? Actually you are see, देखिए, again I am repeating again, whatever credentials you are having, everyone is having opportunities, everyone is having an opportunity. Because why I'm just telling you this thing, because majority of the students are
looking for the free guidance. Believe me friends, free guidance. Although this is also free guidance, so many videos also we are going to put on the YouTube, and every year we do that. But when we talk about the individual thing, na, sir, these are my credentials where exactly you should apply. That is where the importance of this PGC came. पोस्ट गेट काउंसलिंग ऑफ YourPedia कम कि मेरे को मेरे क्रेडेंशियल के अकॉर्डिंगली बताइए सर कि मेरे को किस आईटी में किस कॉम्बिनेशन से अप्लाई करना चाहिए. यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है, यहीं पे डिफरेंस होता है, बिलीव मी फ्रेंड्स. और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, सॉरी फॉर दिस, आप लोग स्टिक कर जाते हैं. और एक और ब्लंडर जो आप लोग करते हो, यू रेफर द लास्ट ईयर कट ऑफ्स. सी दोस कट ऑफ्स आर ऑफ लास्ट ईयर. अगर आपने कोई ट्रेंड चेक करना है ना, अगर आपने अपॉर्चुनिटी चेक करनी है कि मेरे को गेट स्कोर के बेस पे, लास्ट ईयर कट ऑफ के बेस पे मेरे को कोई डिसीजन लेना है, तो कम से कम पिछले 5 साल के कट ऑफ को एनालिसिस करिए. Do the analysis of last 5 year cutoffs for that particular IIT, for that particular department, for that particular specialization. Then only you can make any decision for that. Secondly, for MS program, for MTech research program, there is not any cutoff, not at all any cutoff. Because for the MS research programs or MTech research programs or MS programs, gate score is not the only criteria. CGPA also having very important role for that. CGPA का बहुत बड़ा रोल है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का बहुत बड़ा रोल है, रिसर्च प्रपोजल का बहुत बड़ा रोल है, इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है. दैट इज द रीजन व्हाई MS selections are not visible on the COEP portal. That is the only reason that why MS research opportunities selections or MTech research selections, why it is not visible on the COEP portal. COEP portal is meant for the MTech counseling, and MTech is purely on the basis of your gate score. आपके प्योरली गेट स्कोर के बेस पे सिलेक्शन होता है MTech का, MTech रिसर्च का नहीं, MTech MS का नहीं. उसके लिए आपका CGPA का रोल होता है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. यू विल नेवर एवर फाइंड द कट ऑफ फॉर द MS और रिसर्च प्रोग्राम्स और फॉर द MTech रिसर्च प्रोग्राम. नाउ हियर द रोल ऑफ YourPedia मेंटर्स कम कि आपको कहां अप्लाई करना, कैसे, बिकॉज उनके पास सारा डाटा है कि पिछली बार का क्या हुआ, किस तरीके से हुआ. और दूसरी चीज ये, डाटा इज वन थिंग फॉर MS रिसर्च प्रोग्राम और MTech रिसर्च प्रोग्राम. What you are writing in the statement of purpose, that matters. What type of project you have done and how you are presenting that thing in the statement of purpose or the research proposal, उसका बहुत बड़ा रोल है, उसका बहुत ज्यादा वो मैटर करता है. So next is I am taking of Rajdeep Mistry, CSE 6 and SC category, want to know PSU opportunities. See, for the computer science branch, for public sector opportunity, let me tell you 2 government opportunities, which from the last 2 to 3 years is coming every year from the last 2 to 3 years. Cabinet Secretariat Deputy Field Officer and Intelligence Bureau ACIO Technical. These 2 opportunities are there, which is coming from the last 2 to 3 years continuously, and huge number of vacancies are there. Huge number of vacancies are there. 100 plus vacancies are coming, and they are calling it 5 times. Now, if you are having 600 gate score, SC category, certainly you are going to get call from there. You can apply for that, and whatever other PSU will come, like Power Grid also recruit for the computer science people. Yes, you should apply for that, because everybody will think I'm not going to get the call. So that is the reason why they do not apply. Now, if you apply over there and you get the call, then next game will be your group discussion, group task and interview, which is the requirement of public sector. You should apply for that. And also you can explore for the BRC opportunity also, Rajdeep Mistry, the research organization, that also you can target. That also you can target. Rajdeep Mistry. Next is rank 457, 730 gate score, civil, EWS, any chance for PSU? Yes, Abhishek Jain, you can target the this public sector at this rank EWS category. So because in the EWS category, what rank you will be, because this is the 457 is your combined rank, right? What is your EWS rank? That is the other part. And especially for the Maharatna public sector, you should apply for that, because in Maharatna public sector you will be having the better number of vacancies will be more compared to the other, and do target the multiple public sector which are doing recruitment nowadays without gate. उसको भी आप टारगेट करिए, उसको भी आप अप्लाई करिए. सारी ऑप्शंस को ओपन करके रखिए, सभी ऑप्शंस को ओपन करो, कोई ऑप्शन को क्लोज मत करो. एट द वेरी बिगिनिंग डोंट पिक एंड चूज, अप्लाई एवरीवेयर. जहां भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर, विद गेट, विदाउट गेट. विद गेट के केस में जरूर मेंटर से डिस्कस करके करना कि मेरे को सर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. लेकिन विदाउट गेट तो एवरीवेयर यू जस्ट अप्लाई एंड एक्सप्लोर फॉर दैट, डू प्रिपरेशन फॉर दैट, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को आजकल मिल रहा है विदाउट गेट के केस में भी. नेक्स्ट इज गेट डीए
424 is gate score with rank this. Can I get any college which branch like IST, Shivpur, NIT, Durgapur? Please tell. Sumit Sharma. Yes, सुमित, आपके पास ऑप्शंस हैं, अच्छा ऑप्शंस है आपके पास, ऑल्दो कि ज्यादा इसमें एनआईटीज का बनेगा। अब एनआईटीज के ट्रबल केस में एक ट्रबल है कि एवरीवेयर डीए स्कोर को जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर बीटेक ब्रांच सुमित शर्मा, उसके बेस पे हमें सेल्फ स्पॉन्सर्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको सेल्फ स्पॉन्सर्ड को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए विदाउट गेट के केस में, और अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड भी करना चाहिए। बाकी ट्रिपल आईटीज को एक्सप्लोर करो, विदाउट गेट को, सेल्फ स्पॉन्सर्ड को एक्सप्लोर करो, बिट्स को एक्सप्लोर करो, इनको आप एक्सप्लोर करेंगे तो एट द एंड सर्टेनली यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। आपको उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर सिविल गेट स्कोर 858, रैंक 66, माई अपॉर्चुनिटीज। तन्मय, मल्टीपल। नाउ इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द पब्लिक सेक्टर, डू अप्लाई फॉर द पब्लिक सेक्टर। सी नॉर्मली क्या होता था, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ट्रेंड क्या था आज से जब पहले निटी बॉम्बे होता था, तो निटी बॉम्बे वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज मैनेजमेंट कोर्स था और प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे पैकेजेस मिलते थे। सो नाउ डेज अगेन वी आर अगेन स्टार्टिंग दिस ट्रेंड that if you are having very good gate score and if you don't want to apply for the public sector, then target the management courses of various IITs. Target management courses of various IITs. IC Bangalore, Masters of Management, IC Bangalore Department of IIT Delhi Department of Management Studies, Department of Management Studies, IIT Madras, IOR, IIT Bombay. Each and every IIT is having the management courses. लेकिन ये जो मैंने आपको 4 courses बताए हैं, IIT Bombay, IIT Madras, IC Bangalore and IIT Delhi, इसका प्लेसमेंट दी बेस्ट है। इट्स डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईटी मद्रास हैविंग द प्लेसमेंट्स एज गुड एज इट वाज फॉर द निटी बॉम्बे। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये स्टूडेंट्स ने बोला है। सी द इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट जो हमने किया है लास्ट टाइम, जिनका सिलेक्शन हुआ उनके साथ जो हमने इंटरेक्शन किया है, वो बोल रहे हैं, और ये अब नहीं बोल रहे, सालों से बोल रहे हैं। मेरे को याद है आज से 4 साल पहले हमें कुछ डॉम्स आईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया था, सर यू आर प्रमोटिंग निटी बॉम्बे, यू आर गिविंग अवेयरनेस फॉर निटी बॉम्बे, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज्यादा आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं नीति बॉम्बे के लिए, लेकिन दिस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन आईटी मद्रास इज एज गुड एज नीति बॉम्बे, प्लेसमेंट्स आर वेरी वेरी गुड ओवर देयर। सो ये स्टूडेंट्स ने हमने बताया। सो फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन, मैं जो भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी आपको इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, मैं किस बेसिस पे भी दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ आईटीज हम विजिट करते हैं, स्टूडेंट्स से हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन अदरवाइज जो इतना एक्सपीरियंस है, जो अलग अलग स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट में हैं, जो इतने स्टूडेंट्स पोस्ट गेट काउंसलिंग करते हैं, जब उनके रिजल्ट्स आते हैं, जब उनसे डिस्कशंस होती है, दे गिव अस दिस इंफॉर्मेशन। आज आईटीज में प्लेसमेंट कैसी चल रही है, शायद आपको डाटा न मिले, YourPedia आपको बता देगा कि किस आईटी में, किस डिपार्टमेंट में, किस स्पेशलाइजेशन में कैसा प्लेसमेंट चल रही है। वो आपको स्टूडेंट जो हमारे, क्योंकि ईच एंड एवरी आईटीज, एनआईटीज, एनी डिपार्टमेंट, एनी स्पेशलाइजेशन, YourPedia स्टूडेंट्स आर देयर, आइदर दे टुक द पेड काउंसलिंग और आइदर दे टुक द फ्री गाइडेंस फ्रॉम द यूट्यूब। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज है, तन्मय साहू आपका रैंक 66 है, सो यू कैन टारगेट आल्सो द मैनेजमेंट कोर्सेज जिसका स्कोर बहुत अच्छा है। वो इन 4 कॉलेजेस के, अगेन रिपीटिंग, द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द व्हाटएवर ब्रांच यू आर हैविंग, इफ यू आर हैविंग वेरी गुड गेट स्कोर, now depends upon what is the meaning of very good gate score, right? Masters of Management, we will that mentors having that list कि आपको किस स्कोर के बेस पे, किस कॉलेज में, किस मैनेजमेंट कोर्स में आपको अप्लाई करना चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईटी मद्रास की बात करता हूं, if your gate score is near to 450 or 500 and if your CGPA is 8+ and if you're from general category, मैं जनरल कैटेगरी की एग्जांपल ले रहा हूं, whatever branch you are having, do apply for the IIT Bombay, IIT Madras Department of Management Studies, because shortlisting criteria is not your these credentials, shortlisting criteria is your research proposal. So what you are writing in the research proposal, that is the criteria to get shortlisted for the DOMS IIT Madras, और purely जो selection है उसके बाद वो आपका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और वो इंटरव्यू है वो प्योरली आपका रिसर्च प्रपोजल के बेस पे होता है। सो इफ यू राइट योर रिसर्च प्रपोजल वेरी वेल एंड इफ यू प्रिपेयर योर रिसर्च प्रपोजल फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल, यू विल गेट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट्स आर वेरी वेरी गुड ओवर देयर, वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट्स आर देयर। नेक्स्ट इज सर फॉर 40 marks 37 जनरल कैटेगरी CSE बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच फॉर मी एनी आई ऑलरेडी आंसर्ड यू दिस सुदीप्ता सरकार, you have to explore for NITs, triple ITs,
IITs सेल्फ स्पॉन्सर्ड, यू हैव टू एक्सप्लोर, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बिट्स को करो। बिट्स में क्या है कि आपको मैं बिट्स का बताना चाहूंगा, वी जस्ट विजिटेड बिट्स। बिट्स में क्या है कि आप विद गेट विदाउट गेट दोनों तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। इफ यू आर गोइंग देयर विदाउट गेट, आई थिंक दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इफ यू आर नॉट गेट क्वालिफाइड and if you are getting admission through the BITS HD exam, higher degree exam, then you will get the assistantship, and that assistantship is more than what you are getting through the MHRD 12,400. Here the assistantship is 13,400, 1,000 more than your this gate assistantship. Placements very good over there. Believe me friends, I do not find even a single student over there in BITS Pilani campus, not even a student, not even a single worker, not even a single teacher over there who were not positive about the institute. मैंने एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जो पॉजिटिव नहीं था इंस्टीट्यूट के बारे में. Everybody was talking very high about the this institute, about the BITS Pilani. Placements are also very good over there, right? So next is next query is I have to take so 610 environmental science, any opportunity? Yes Munish, gate score is not the only criteria by which anybody can guide you. 4 credentials are required. Your branch, do mention in the chat box your branch, your gate score, your CGPA, your category. Then only anybody can tell you, YourPedia can tell you that what opportunities you will be having. Tell me these 4 credentials. Electrical, all India rank 5138, daily motivation, fun, 419 score, SC category. Can I get VLSI or PSU call? Yes, VLSI. If not VLSI, then semiconductor solid state integrated, you will be having the opportunity. But with which IIT, with which course you should apply, that matters. Dushan sir is going to tell you that how to utilize this score. If you're from the reserved category, SC, ST, whatever branch you are having, apply very cautiously. Mentor की guidance के बिना मत apply करना, क्योंकि आप लोग बहुत सारी ऐसी opportunity waste कर दोगे. मैं आपको clearly बता रहा हूँ. Like this student, daily motivation, fun. Now he will keep on applying everywhere in the VLSI, everywhere in the VLSI. And let us suppose he is not having any chances. Let us suppose for IT Delhi for VLSI, but in IT Delhi he is having chances for other particular department specialization. Apply for that. In VLSI, apply for other IT. Come up with the selection. In the end, do the comparison. Don't compare any IT department specialization with any other IT course department specialization at the very beginning. Don't compare that. That will be the blunder for you, because you will lose very good opportunity. Because applying only is not going to give you the selection. Applying only doesn't mean you will get selection. Apply करो, काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होंगे, अलग अलग राउंड में अलग अलग मिलेगा, उधर से MSR भी रहेगा. In the end, come up with the multiple selections, then do the comparison, then discuss with the mentor. Sir, I got these 2 or 3 selections. Please tell me which is best out of it. Please tell me this thing. And that is the important part. So I think now Dr. Vijendra is going to take over this very soon. He will discuss with you about the other opportunities you will be having. So keep on putting your queries in the chat box. We will reply you. Next is gate environment. Maya Tripathi, gate environment 449, gate civil 360, CGPA 7.87 unreserved. Yes, Maya Tripathi, with the environment, yes, you will be having some opportunities. With civil 360 NIT, certainly you are going to get. Environment, with environment, yes, some interdisciplinary courses you should apply, that mentors are going to guide you. Civil mentor will guide you that where you should apply, and do target the if you want the better option other than these credentials, then do target the this self-sponsored programs. That will be very good opportunity for you. That also you should explore. Next will be, sir, please tell gate electrical SC category, 35 marks, this much rank, score for 34, where I can get VLSI. Jordan, electrical SC 35 marks. CGPA didn't mentioned. Jordan, CGPA is also very good criteria, is very important criteria.
And that I already told everyone that everybody want VLSI, EC, electrical. More than 90% of the students want VLSI. So if I ask you, can everyone can get this thing? No. सभी को नहीं मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हर किसी के लिए वेट कर रही हैं. बिलीव मी फ्रेंड्स, आपने भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं अगर पिछले साल गए हैं आईटीज के अंदर, सीटें खाली चली जाती हैं. लेट मी टेक यू एग्जांपल. पावर सिस्टम इन आईटी दिल्ली दिस ईयर जून अगस्त से लेके नवंबर तक आते आते 3 स्टूडेंट खाली बच गए हैं. ओनली 3 स्टूडेंट. 14-15 का वहां पे सिलेक्शन हुआ, 3 स्टूडेंट बच गए लास्ट में नवंबर में आते आते. ओनली 3 स्टूडेंट्स. अब रीजन जो भी है उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्या रीजन है उसके पीछे, लेकिन ऐसा होता है. खाली चली जा रही है यार सीटें, क्योंकि पता नहीं क्यों इस टाइम पे हर एवरीबडी वांट्स जॉब फर्स्ट. एवरीबडी वांट जॉब फर्स्ट. ठीक है, दैट इज एवरीवन इंडिविजुअल डिसीजन. Everybody having their own individual decision. 341 score OBC DA. 341 score OBC DA. Less chances, Charan. You should explore the without gate self-sponsored opportunities. There you will be having the better options. You can explore for that. You can explore for that without gate opportunities. Without gate opportunities. Now who will be next? Next will be sir 19.99 score CS. What do you do for next year? Yes, you can see Vijay, it depends upon that what is your BTech passing year, what is your CGPA. See, if you are recently passed out, you can plan for the next year. But if your CGPA is good, and you can try for the self-sponsored programs, yes, you can target for that. Vijay Kumar. Next is 498 score. Will I get NIT? BU Patna. Now it depends upon what is your category. You didn't mention that. Now sir is overtaking this. Okay, friends. So let me give you some inputs here now. ओके सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कुछ ऑप्शंस जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आसान होती हैं, एंड व्हाट यू कैन एक्सप्लोर. थैंक यू. Okay, so gate score 400 less than 400. Let's say low gate score less than 400 gate score. So what are the opportunities? And I'm saying about unreserved category. I can say 400 gate score se kam is low gate score. Low gate score is something which is less than 400 for UR. For OBC, you can say 735, EWS, let's say 300 less than SC, 275 for ST, and for PWD you should apply, because PWD is quota which is less available. So I mean less candidates are there, so you can apply.
सो इफ योर ओबीसी 375 से कम है आपका गेट स्कोर, ईडब्ल्यूएस 375, यू आर 400 लेस, you are in the low gate score category. Ask yourself, is your CGPA more than 7? Is your CGPA more than 7? If this is the gate score and CGPA is 7 plus, certainly, listen to me carefully, certainly you will get call from old IITs. And this I'm saying for all the branches. Engineering is more difficult to get, science is very easy. When we say science, like, including mathematics, physics, chemistry, bio, even less than 400 score is supposed to be good score, gate score. Science mein it is very easy to get into IITs, but engineering mein more difficult compared to your science. Now if your category is UR and your gate score is less than 400, OBC 375 less than 375, something like that, and your CGPA is 7 plus, certainly you will get calls from old IITs. Now what you have to do is this. There are two things you have to do to maximize your gate score. For MTech, there are COAP rounds. 1 to 10 के rounds होते हैं COAP. Now what are COAP rounds? Whenever you apply in some institute, your result gets displayed on COAP platform. Your result gets displayed on COAP platform. वहां पे आपका रिजल्ट डिस्प्ले होता है COAP प्लेटफॉर्म पे, COAP प्लेटफॉर्म पे. So your result will be visible there. First round 1 comes, second comes, and suppose you do not have any option in your hand. अगर आपके कोई ऑप्शन नहीं है तो जब राउंड 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है तो आप रिटेन एंड वेट कर सकते हो. लेकिन आफ्टर 4th 5th राउंड या either you have to select it or reject it. Most of the students select or reject by 6th or 7th round, and they do not go for 8th, 9th, 10th round because there's a risk involved. So who can go till spot round or 10th round, because best opportunities are at the spot rounds. जब spot round में जाओगे, you will get the best opportunities. Who can go till all these rounds? So you can go to these rounds if you have something in your hand, and that something in your hand should be MS or MTech research. As of now, I'm talking about those who are in this category. 400, less than 400 gate score, CGPA 7, 7 plus, 7.5 plus, जो भी है, तो MTech research is something which you should apply in core branches, in interdisciplinary department, जहां पे भी YourPedia mentors will suggest you should apply for MTech research या MS programs, wherever mentors will suggest you. And MTech research में certainly you will get interview call. You have interviews in MTech research. There are interviews. You need to prepare really well for the interviews to get selected. An interview for MTech are different from the interview of PSU. PSU interview में HR is also asked, couple of subjects are asked, PSU का information is asked. In MTech interview or MS interview or IIT interviews, they are going to ask you about your BTech project. Even if you have not done properly, तो BTech project थोड़ा सा arrange कर लो. BTech project पे आएगा. एंड जिस स्पेशलाइजेशन में आप एमटेक करना जाना चाहते हैं, जिस स्पेशलाइजेशन में एमटेक एमएस के लिए जा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा. तो सपोज यू आर गोइंग फॉर डिजाइन, सो क्वेश्चन इन द इंटरव्यू विल बी फ्रॉम डिजाइन ओनली. एंड इफ यू गो फॉर इंटरव्यू, ऑफलाइन इंटरव्यू, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज हाई. तो ये अपना ऑप्शन अपने पास रखना. सेकेंड, इफ योर गेट स्कोर इज 400 plus, then challenge will be to get the best which you can get. I mean, challenge will be to get the best you can get. Now, this is less than 400. This is CGPA. MTech research में अप्लाई करना है. और अगर बहुत ही कम गेट स्कोर है और CGPA बहुत ज्यादा है, जैसे गेट स्कोर इज 260 लेट अस से, और CGPA 9 plus, तो अप्लाई फॉर डायरेक्ट PhD. Maybe you can apply for direct PhD also in top IITs, because for direct PhD, gate score is just qualifying is required. But CGPA should be good, research project should be good. तो आपको टॉप IITs में PhD मिल सकता है. अगर आपने वहीं से करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस PhD को अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते MTech में कन्वर्ट भी कर सकते हो. तो ये उन कैटेगरीज के लिए है.
नाउ कमिंग फॉर हाई गेट स्कोर, हाई गेट स्कोर को मैं किसको बोलता हूं, व्हाट इज हाई गेट स्कोर? हाई गेट स्कोर आई से if it is more than 600 plus, you are 575 EWS OBC, and 500 plus for SC, 475 ST, so on so forth. I call this high gate score. If your gate score is in this, PSU का कॉल आता है. अब डिपेंड करता है how many PSUs are out and how many PSUs you have to apply, but PSU call will be there. मैंने अभी दो कैटेगरीज बनाई, एक लो गेट स्कोर 400 से कम, 375 OBC, 375 EWS, 300 SC, 275 ST, लो गेट स्कोर बट साइज इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. मैं अभी ओनली IITs की बात कर रहा हूं, मैं NITs की बात नहीं कर रहा हूं. NITs में CCMT में देयर इज नो ट्रबल. Whatever gate score you have, you are to fill one, अपना चॉइस, एक अपना चॉइस भरोगे दैट दिस इज माय फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, चाहे कोई भी गेट स्कोर है, whatever gate score you have, fill the choice, whatever you want are to get, you will get it. अगेन CCMT में वही है कि आपको लास्ट स्पॉट राउंड तक अगर जाओगे तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी. There are so many hidden routes, so I'm just sharing with you those thumb rules, those points which you should focus so that you maximize your gate score. जहां भी SOPs रिक्वायर्ड हो, जहां भी इंटरव्यू के लिए रिक्वायरमेंट हो, वहां पे जरूर जाना, वहां पे अपॉर्चुनिटीज आपकी बहुत ज्यादा होती है. दैट इज वेयर यू कैन कन्वर्ट इट. नाउ PSU की कॉल जब आएगी तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर PSUs. उसमें आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को तैयार करना है, HR वगैरह को तैयार करना है. दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर दैट. मैं कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस यहां पे लेता हूं फ्रेंड्स. जैसे विजय कुमार हैं, CGPA 7.8 और आप अपना स्कोर बता रहे हैं 19.9. दैट कैन नॉट बी द स्कोर, दैट विल बी द मार्क्स. मेरे को स्कोर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड होगा. विजय कुमार, यू हैव टू गिव मी योर स्कोर, नॉट मार्क्स. अगर आप मेरे को अपना मार्क्स स्कोर दोगे तो मैं बता पाऊंगा. आयुष मेहरा 589 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन SC कैटेगरी. यस, PSU कॉल आएगा. PSU कॉल इस पे आता है. आपने बोला 589 SC कैटेगरी, मैंने बताया 500 पे आपका आता है इंटरव्यू कॉल PSU से. तो आपको PSU में अप्लाई करना है. डिपेंडिंग अपॉन कितने PSU है, आपको उसमें से इंटरव्यू कॉल आता है और आपको उसको अच्छे तरीके से तैयारी करके देना है. दैट इज रिक्वायर्ड. Now, let me take some more questions. Some of you members who are put 613 SC computer science. Obviously, you see one thing, most of you are only giving me gate score. Gate score is not the only criteria on the basis of which you get selected. There are 4 things which are required. I call it 4 credentials. There are 4 credentials required. One is gate score. Another is CGPA. Then is category. And 4th is branch. If you tell me these 4 things, then I'll be in position to tell you कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, what you can think of getting, आपको क्या मिल सकता है. That can be told to you once you give me these 4 things. तो अगर आप ये 4 चीज देंगे, then I'll be in position to tell you what you are going to get it. Now, if your no gate, you did not qualify the gate score, तो क्या ऑप्शंस हैं? पहला, बिट्स का HD एग्जाम होता है इन मंथ ऑफ May. HD एग्जाम के फॉर्म्स आर आउट. BITS has 3 campuses. One is BITS पिलानी कैंपस राजस्थान, एक हैदराबाद में और एक गोवा में. तो BITS के यहां पे आपका एग्जाम होगा HD एग्जाम और उसमें स्कॉलरशिप मिलता है. IITs में 12,400-500 मिलता है, यहाँ पे 13,400-500 स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन फीस भी होती है. तो BITS का HD एग्जाम है. एक ट्रिपल IITs के एग्जाम होते हैं, जैसे हैदराबाद, ट्रिपल IIT हैदराबाद का भी है, बाकियों का भी एग्जाम होता है और इस एग्जाम को PGEE बोलते हैं. देन वेलूर इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, वो भी
अच्छी इंस्टीट्यूट है जहां से मास्टर्स कर सकते हैं. देन देयर आर IITs विदाउट गेट आर मंडी. IIT मंडी only tuition fee and scholarship you may not get, बट अगर गेट निकाल लिए अगले साल तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा. उसके बाद IIT जोधपुर जिसमें 4 लाख रुपए के आसपास का खर्चा बैठता है. IIT हैदराबाद इज प्रेटी कॉस्टली जिसमें 12 लाख का खर्चा होता है. सो एंड देन सम मोर IITs दिस ईयर विल टेल यू, दैट इज विदाउट गेट. I don't think you should take a break या आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए बिकॉज गैप इन करियर इज नॉट गुड. तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इफ यू टेक गैप इन करियर और ड्रॉप दैट मे नॉट बी गुड फॉर यू, तो वो आपको नहीं लेना है. देयर आर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, देयर आर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो जो आपकी विदाउट गेट आपको मिल सकती हैं. Now I will tell you something about South Korean universities. No IELTS is required, no GATE is required, no GRE is required. Then you will say, sir, what is required? आपको प्रोफेसर को मेल करना है, ईमेल करना है और अपना CV और SOP भेजना है. If professor likes your CV and SOP, तो साउथ कोरिया के अंदर फुली फंडेड आपको फुली फंडेड MS और इंटीग्रेटेड PhD और PhD मिलने के चांस हैं. साउथ कोरिया इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स बिकॉज वहां पे स्कॉलरशिप है. और मार्च के अंदर मैंने कुछ वीडियोस शेयर भी किए हैं, बनाए भी हैं. मार्च के अंदर आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन देती हैं एंड एडमिशन का तरीका है मेल द प्रोफेसर. आई थिंक दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड where professors will give you admission if you mail them. If they appreciate, if they like your credentials, they will give you. So you can get in touch with our global mentor इशिता मैम, आप उनसे बात कर सकते हैं and you can start approaching that. ये साउथ कोरिया है. अगर आपके पास गेट है भी नहीं भी है आप अप्लाई कर सकते हैं. नंबर 2, other than South Korea, you can think of universities in Germany. Now जर्मनी में जो यूनिवर्सिटीज हैं, these universities, technical universities are very prestigious. कुछ यूनिवर्सिटीज गेट स्कोर लेती हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज गेट स्कोर को रेफर करती हैं. मतलब उनको गेट स्कोर नहीं भी चाहिए लेकिन रेफर जरूर करती हैं बिकॉज जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी जर्मन और टेक्निकल RWTH ये गेट स्कोर को रेफर करती हैं. तो यहाँ पे गेट स्कोर चलता है. तो जर्मनी की बहुत सी यूनिवर्सिटीज को आपका गेट स्कोर, यहाँ पे IELTS इज रिक्वायर्ड और यहाँ पे आपको अमाउंट ब्लॉक करना पड़ता है. मतलब 11-12 लाख रुपए अमाउंट ब्लॉक करना पड़ता है. लेकिन अगर अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आपको चले जाना चाहिए बिकॉज वहां पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है. तो यहाँ खर्चा आपका 5 लाख से लेके तो 12 लाख के बीच में आप सोच सकते हैं. और ये IIT हैदराबाद से कम खर्चे में आप जर्मनी से पढ़ाई कर सकते हैं. वहां पे आप अर्न भी कर सकते हैं पैरेलल. तो ये दूसरी ऑप्शन है. तीसरी ऑप्शन आपके पास सिंगापुर की है और सिंगापुर में 2 यूनिवर्सिटी टेक्निकल आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर एंड NTU, ये 2 यूनिवर्सिटीज बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं. स्कॉलरशिप मिलने के चांस कम है लेकिन लोन पे आप जा सकते हैं क्योंकि इनका रैंक 7 and 11 रैंक है. NUS रैंक 7 है, NTU रैंक 11 है. दे आर वेरी वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन सिंगापुर. चौथी यूनिवर्सिटी आपके पास आती है जो चौथा कंट्री है, डेस्टिनेशन है, दैट कैन बी योर हांगकांग. सो हांगकांग इज ऑल्सो one of the very very reputed destination or country for Indian students. So if you want to study abroad, बाहर से एजुकेशन लेना चाहते हैं, MS PhD करना चाहते हैं, then South Korea is a destination, then Hong Kong is a destination, Singapore is a destination, Germany is the destination. और अगर if you want to go for Nordic countries like this Norway, Sweden, Denmark, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ेंगे लेकिन these are also good destinations. So these are also the good places for you if you want to pursue higher education in these countries. So ये गेट अगर कम स्कोर है या कोई स्कोर नहीं है तो इनके साथ इन कंट्रीज में आप ट्राई कर सकते हैं. एंड YourPedia का जो इंटरनेशनल ग्लोबल विंग है YourPedia ग्लोबल, वो आपको ये अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है. तो आप वहां पे हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं. सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू अब्रॉड में.
अब इंडिया के अंदर आपकी सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको एक्सप्लोर करने में नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपके पास लगते हैं। जैसे सबसे पहले जो आपको इंटरव्यू आएगा वो आईआईसी बेंगलोर का आएगा। आईआईसी बेंगलोर में देयर इज एमटेक, आईआईसी बेंगलोर में देयर इज एमटेक रिसर्च, जिसको एमएससी बोलते हैं, एंड देन देयर इज अ पीएचडी एंड देयर इज अ एमबीए। 23rd मार्च इज द डेडलाइन फॉर आईआईसी बेंगलोर, जो बढ़ जाती है। नॉर्मली डेडलाइन उसको एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेडलाइन है आईआईसी बेंगलोर में, दैट इज 23rd मार्च। नाउ देयर आर कोर ब्रांचेस एंड देयर आर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। कोर एंड इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ओनली गेट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट गेट आईआईसी बेंगलोर में नहीं है। वाई एम सेइंग आईआईसी बेंगलोर? बिकॉज ये पहला इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली एडमिशंस जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाता है। एज ऑफ नाउ डेडलाइन फॉर आईआईसी बेंगलोर इज 23rd मार्च। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि आईआईसी में यू शुड अप्लाई ओनली इफ योर गेट स्कोर इज वेरी हाई, बट दैट इज नॉट ट्रू। I mean, if your gate score is not very high, moderate gate score, even then you can apply in IISc Bangalore, because there are core and there are interdisciplinary. Interdisciplinary में there is always interview in MTech also. So MTech score के लिए high gate score required हो सकता है, MTech research and PhD के लिए high gate score is not required. For MTech research and PhD, even as lesser gate score, you will get the interview call. So IISc बेंगलोर में अगर एडमिशन लेना है तो कैसे लेना है? आप वहां एमटेक रिसर्च में भरें, और अगर इंटरडिसिप्लिनरी में एमटेक और एमटेक रिसर्च भरा है, इंटरव्यू विल बी देयर। एमटेक के इंटरव्यू अलग आते हैं, एमटेक रिसर्च के अलग आते हैं। इंटरव्यू के लिए क्या तैयार करना है? मैथमेटिक्स पॉजिटिवली पूछा जाएगा। अपने इंजीनियरिंग के वो सब्जेक्ट्स जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट, एंड योर प्रोजेक्ट, बीटेक प्रोजेक्ट। सो इफ यू प्रिपेयर फॉर दीज सब्जेक्ट्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड योर बीटेक प्रोजेक्ट एंड योर सम मैथमेटिक्स, तो अगर आपने इसको तैयार किया तो इंटरव्यू आप निकाल सकते हैं। सो इंटरव्यू का कॉल आना इज द मेन चैलेंज फ्रॉम आईआईसी बेंगलोर, एंड इफ यू गेट द इंटरव्यू कॉल फ्रॉम आईआईसी बेंगलोर, you can crack that and you can get admit there. So IISc Bangalore is the institute which is 23rd March. IISc Bangalore के बाद IIT मद्रास आ जाएगा, and many students are confused between MTech research and MTech. I tell you friends again and again, MTech research is even better than MTech because opportunities are more, global opportunities are more. बाद में अगर आपको abroad जाना होगा, MTech research is better case. What about PhD? Sir, I am not ready for PhD. It may take a lot of time. But PhD और MTech research के forms same भरे जाते हैं IISc बेंगलोर में. Forms are same. MTech research and PhD forms are same. So they give you chance when you go for interview. They ask you whether you want to go for MTech research or PhD. जब आप जाओगे वहां पे, they give you that particular chance. And accordingly, आप बोलोगे मेरे को MS करना है, तो वो MS में आपको चांस देते हैं. That is decided in the interview itself. Interview same होता है MTech research का, और PhD का interview is same. Now many IITs में PhD को MTech के अंदर, MTech research के अंदर या MTech के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है after 2 years of your theoretical work and your studies. So 2 साल के बाद PhD can be converted into MTech. As per national education policies, these options are now coming. So you can think of doing that also. आपको interdisciplinary department में भरना है. So question now is, sir, how many departments and which department we have to fill the form? Answer is as per your interest, as per your credential, and as per the fee structure. कई बार आप बहुत जगह पे नहीं भर सकते. As per fee structure आपको फॉर्म्स डालने होते हैं. तो आपको जो फॉर्म्स डालने हैं वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे, दैट आपका क्रेडेंशियल्स क्या है, जो आपके जितने भी हैं वो क्रेडेंशियल्स क्या है, आपके CGPA कितना है, गेट स्कोर कितना है, कैटेगरी क्या है, ब्रांच क्या है, उसके बेस पे होता है, और आपको उसके बेस पे अप्लाई करना होता है. वो मेंटर आपको बताएंगे. ये 1-to-1 है. आप में से बहुत से कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं ना, सर मेरे क्रेडेंशियल्स ये हैं, मेरे को कहां से कॉल आएगा, मैं कहां पे भरूं? वो कोई एक या दो डिपार्टमेंट नहीं है. आपको हर IIT के अंदर, हर इंस्टीट्यूट के अंदर आपको मेटिकुलसली भरने हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मैं बताता हूं, प्लीज डू नॉट रेफर प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, बिकॉज वो मिसलीडिंग होती हैं. आप उनको देखते जरूर हैं, लेकिन आप उनको देख तो लें, लेकिन प्लीज ब्लाइंडली डू नॉट फॉलो द प्रीवियस ईयर कट ऑफ.
क्योंकि कट ऑफ्स में देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन. आई एम सेइंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू यू. You should not do not blindly follow previous years cutoffs ऑफ एमटेक. एमटेक रिसर्च की तो होती नहीं है. कट ऑफ्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है. मैं देखता हूं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी कैंडिडेट्स कट ऑफ्स को देख रहे होते हैं. दैट सर कट ऑफ इन दिस डिपार्टमेंट लास्ट ईयर वाज 450, मेरे 475 हैं, सो आई विल गेट एडमिशन. नो, ऐसा नहीं होता. कट ऑफ्स में देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन फॉर सेम डिपार्टमेंट. अगर आपका 2025 में, अगर लेट अस से 2025 में कट ऑफ 2025 में अगर 500 है, 2026 में हो सकता है 550 हो जाए, या हो सकता है 650 हो जाए, या हो सकता है 350 हो जाए. ऐसा हो सकता है. आई मीन कट ऑफ में देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन. सो कट ऑफ आपने देखना है तो देख लीजिए, होता है वहां पे. और ये कट ऑफ जो होता है ये एमटेक का कट ऑफ होता है. एमटेक रिसर्च का कट ऑफ वैसे भी नहीं होता. देयर इज नथिंग लाइक कट ऑफ फॉर एमटेक रिसर्च. कट ऑफ इज फॉर एमटेक ओनली, एंड दैट टू ह्यूज वेरिएशन. तो आप देखना तो देख लीजिए, लेकिन कट ऑफ इज नॉट द क्राइटेरिया वेयर टू अप्लाई, वेयर नॉट टू अप्लाई. देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच गो इनटू पिक्चर टू डिसाइड हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉरवर्ड. इसलिए आप मेंटर्स जो आपको बताएंगे आपके केस के बेस पे, उसको जरूर आप फॉलो करना. mentors are going to ask you what your interest is, accordingly they are going to guide you. अब इसमें आपको दो चार चीजें आपको बतानी होती हैं मेंटर्स को. एक आपको गेट स्कोर बताना होता है. you have to tell what your gate score is, you have to tell what is your CGPA is or percentages. आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, आपको अपनी ब्रांच बतानी है, एंड आपको अपना इंटरेस्ट भी बताना है. सो व्हाट इज योर इंटरेस्ट, दैट आल्सो यू हैव टू टेल. Interest means you want to go in design, or you want to go into thermal, or you want to go for industrial, what you want to go for. So आपको ये चीजें बतानी है कि आपका गेट स्कोर कितना है, सीजीपीए कितना है, कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ब्रांच मैकेनिकल, ब्रांच सिविल, और इंटरेस्ट किसमें है, डिजाइन में है, जियोटेक में. एंड मेंटर्स आर आल्सो गोइंग टू आस्क यू व्हाट एक्चुअली यू वांट. व्हाट डू यू वांट मतलब आपको एमटेक करना क्यों है. You want to go for PhD abroad, तो रास्ता अलग होगा. You want to prepare for PSU, preparation will be different. You are focusing on campus placement, then things will be different. You need to be very very clear. You need to tell very clearly to the mentors what exactly do you want, where do you want to go, what do you want to get into. You want MTech or MS for what purpose? Campus placement, so mentors will suggest you different. Higher education abroad, foreign PhD, different things. Or if you want to, because if you want to go for higher education PhD abroad with fully funded scholarship, then MS, MTech research is the course, not MTech. Then mentors will suggest you go to the old IITs MTech research. What is your interest, that they are going to tell you. Are you going to prepare for PSU, what you are going to prepare. So these are also the criteria. So these are the factors. MTech का purpose क्या है, what you want to do, in which stream you want to do, what is your CGPA, what is your gate score, what is your category, what is your interest in. Accordingly mentors will tell you to apply in these branches. And then there are courses where statement of purpose is required. So there are so many videos on YourPedia जो statement of purpose के ऊपर बनाए गए हैं. There are so many videos which are about statement of purpose, what statement of purpose is all about, what do you expect from statement of purpose, how the statement of purpose is written, and what questions in the statement of purpose are asked. Now let me tell you, typically statement of purpose is required for your MTech research programs. पहले मैं आपको बताता हूं इंटरव्यूज किस में होते हैं. इंटरव्यूज आर इन एमटेक एज वेल एज एमएस, जिसको एमटेक रिसर्च भी बोलते हैं. एवरीवेयर you go for MS or MTech research, there will be interview.
and plus SOP, statement of purpose, और research statement is required. MTech में 30 to 40% places में there is a interview. एंड अगर एमटेक आपका इंटरडिसिप्लिनरी में है, नॉट इन कोर ब्रांच बट इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, इफ एमटेक इज इन इंटरडिसिप्लिनरी देन सर्टनली देयर इज गोइंग टू बी इंटरव्यू. लाइक आईसी बेंगलोर में इंटरडिसिप्लिनरी के लिए जब जाओगे तो वहां पे इंटरव्यू है. एमएस और एमटेक रिसर्च में जहां पे भी जाओगे देयर इज अ इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू में मैथमेटिक्स आता है, आपके कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, आपका बीटेक का प्रोजेक्ट आता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स do not have their BTech projects with them. BTech project is very very important. अगर आपने BTech project सीरियसली नहीं किया है, अगर आपने अपना इंटर्नशिप ढंग से नहीं किया है, प्लीज ट्राई टू गैदर दिस. BTech के प्रोजेक्ट को अपना देखना स्टार्ट करो, इंटर्नशिप को देखना स्टार्ट करो, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाट योर BTech project is all about, what you have done in your BTech project, and some question they are going to ask you from the BTech project. So if you are not very clear about BTech project, इधर अपने फ्रेंड से लो BTech project समझने की ट्राई करो, बट BTech project इंटरव्यू में पूछा जाता है. Along with that, you should be good in mathematics. Mathematics इंटरव्यू में पूछा जाता है. प्लस सम सब्जेक्ट जो MTech से रिलेटेड है वो आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे. इंटरव्यू में वो कुछ ही सब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे आई गिव यू एग्जांपल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: डिजाइन, thermal, industrial, production. So if you are going for MTech in production, then subjects of production engineering will only be asked. If you are going for design, subjects of design will only be asked in the interview. Mathematics, IIC Bangalore में, IIT Madras में mathematics पूछा जाता है. BTech project and internships are important. BTech projects and internship are asked in the interview. Now, what is the typical statement of purpose? Statement of purpose is like one page or half page document in which you write कि आपको इस फील्ड में मास्टर्स क्यों करना चाहते हो, and what is your project, how your background is linked to this particular area, and why you want to do your higher education in this particular stream. That is called statement of purpose. बहुत से statement of purpose YourPedia के पैनल के ऊपर पढ़े हैं. आप उन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रेफर कर सकते हैं जो YourPedia के पैनल पे पढ़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं. And they are very very important statement of purpose for each department. जो selected candidates के हैं उनको देख के आपको पता लग जाएगा how these things are written. So why you want this particular department, what is your background for this department, and what you want to do. अगर आप इस department में आ गए उसको statement of purpose बोलते हैं. PhD के इंटरव्यू में भी मांगता है और MTech रिसर्च या MS के इंटरव्यू में भी मांगता है. So wherever statement of purpose is required, you should prepare for that. IIT बेंगलोर में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज नॉट रिक्वायर्ड. IIT मद्रास में वो हाफ पेज का 1 पैराग्राफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगता है, स्मॉल, वो आपका उतना सा छोटा सा ब्रीफ एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगेगा. नटशेल में फ्रेंड्स ये है कि जो भी आपका गेट स्कोर है, व्हाटएवर यू हैव गॉट, उस गेट स्कोर को कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सिस्टमेटिकली आगे प्रोसीड करना है, आपको अलग अलग जगह पे अप्लाई करना है. कुछ ऑप्शंस जो आपकी निकल के आती हैं, some options which you get, some options which you are going to get, some options which you are going to get typically are for higher education through gate score. हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं और जॉब या PSU की आपके पास ऑप्शंस होती हैं. अगर आपका गेट स्कोर, if your gate score is more than 550, then you stand chance for those jobs जो gates के बेस पे ली जाती हैं. Otherwise, non-gate jobs you should try, like HPCL का last date is 25th of March. तो अगर HPCL में आप 25th of March तक अप्लाई करते हैं, you have a chance to crack this exam. 3rd May को there is an exam of HPCL, you can crack that. तो ऐसी बहुत सी जॉब्स आती हैं. हायर एजुकेशन भी 2 तरह का आपके पास है, एक इंडिया से है और एक अब्रॉड से है. अब इंडिया और अब्रॉड में विद गेट एंड विदाउट गेट, विद गेट एंड विदाउट गेट दोनों ही है. एंड अब्रॉड में भी विदाउट गेट सभी जगह पे है और विद गेट
कुछ जगह पे है। फॉरेन में विद गेट आपका सिंगापुर एंड जर्मनी में आप गेट का यूज कर सकते हैं। विदाउट गेट सब जगह है, लेकिन फुली फंडेड अगर आप करना चाहते हो, फुली फंडेड आपके पास साउथ कोरिया एंड हांगकांग जैसी जगह में आपके पास फुली फंडेड है। लेकिन कम खर्चे पे, एट लेसर कॉस्ट, इफ यू वांट टू गो, देन इट इज जर्मनी, और दिस इज रिलेटेड टू सिंगापुर। सो जर्मनी, सिंगापुर एंड सम यूनिवर्सिटी, सम कंट्रीज लाइक इटली, फ्रांस, वहां पे आपका कम खर्चे पे मास्टर्स हो सकता है अब्रॉड में। अब विद गेट इंडिया में आपके पास आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, आपके बिट्स हैं, आपके पास वीआईटीज हैं, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ट्रिपल आईटीज हैं। विदाउट गेट भी आप इन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं जिनको सेल्फ स्पॉन्सर्ड बोलते हैं। वन ऑफ द चीपेस्ट बट बेटर, वेरी गुड ऑप्शन in IIT without gate is IIT Mandi. Why I am saying again IIT Mandi? Because IIT Mandi ने without gate वाले candidates को एक option दिया है that even if you don't have gate, we will not give you scholarship. फीस उतनी ही रहेगी जितनी गेट वालों की है। गेट वालों को 12,400 का स्कॉलरशिप मिलता है, तो मान के चलो 1.5 लाख आपका फीस वगैरह लगती है, जो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा वो इतना कम मिलेगा आपको स्कॉलरशिप। अदरवाइज जो आईआईटी मंडी का फीस है, हॉस्टल का रहने का, वही खर्चा आपका होगा, स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। तो आईआईटी मंडी में एमटेक रिसर्च के लिए आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर दिए तो आपको आईआईटी मंडी में एमटेक रिसर्च में एडमिशन मिल जाएगा। सो दैट इज विदाउट गेट। सिमिलरली आईआईटी जोधपुर में सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, 4-1 लाख रुपए का खर्चा लगता है। उसी तरीके से आपका आईआईटी हैदराबाद में महंगा है, और बिट्स के अंदर आपके एचडी एग्जाम्स हैं, ट्रिपल आईटीज के अंदर हैं। तो विदाउट गेट ये आपकी कुछ ऑप्शंस आपके पास फ्रेंड्स होती हैं। सो ओवरऑल दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस फ्रेंड्स व्हिच यू कैन एक्सप्लोर। नाउ आई थिंक यू गाइज आर आस्किंग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मनीष कुमार इज सेइंग 498 गेट स्कोर है, आईआईटी दिल्ली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मिल सकता है क्या एससी कैटेगरी? हाँ जी, 498 एससी कैटेगरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से कॉल आपको आ जाएगा। यू विल गेट इट। हो सकता है आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ कोप में जाना पड़े। जैसे आपको कोप के नेक्स्ट राउंड में जाना पड़े, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव टू गो इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ कोप। सो कोप के नेक्स्ट राउंड में आपका 7th या 8th राउंड ऑफ कोप में मिलने के चांस होते हैं इसमें। लेकिन आपको तब तक थोड़ा रिस्क लेना है। यू हैव टू कीप वेटिंग सो दैट यू आर इन पोजीशन to go up to that level of that particular rank। तो अगर कोप में आप अगले राउंड्स तक चले गए तो आपको इसमें एडवांटेज होता है। नाउ लेट मी शेयर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद यू, हाउ यू कैन गेट इनटू दिस कोप राउंड्स। कोप है क्या, इसको ध्यान से सुनना। योर एमटेक रिजल्ट गेट्स डिस्प्लेड ऑन दिस। एमटेक रिजल्ट is displayed on COPE platform। और इसके 10 राउंड होते हैं। पहला राउंड, उसके बाद सेकंड राउंड, उसके बाद थर्ड राउंड, उसके बाद 4th राउंड, ऐसे चलते जाओ। फिर 9th राउंड, फिर 10th राउंड, फिर स्पॉट राउंड, उसके बाद आ जाएगा स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में जो बच जाता है वो चीजें आपको मिल जाती है। पहला राउंड होता है वेट एंड रिटेन। मैंने अप्लाई किया, फर्स्ट आई विल अप्लाई इन वेरियस कोर्सेज, और उन एप्लीकेशंस का रिजल्ट यहां पे डिस्प्ले होता है। तो रिजल्ट डिस्प्ले होता है कोप में, बट यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि मैं इसको चूज करूं या ना करूं। अब पहले राउंड में आपको 2 जगह से मिला, अगर आपको कोई भी नहीं लेना है तो आप सेकंड राउंड में चलते हो इनको रिटेन करके। सेकंड राउंड में कुछ और ऑप्शंस आपको मिलती हैं, 1-1 वीक के गैप पे होता है या 2-2 वीक के गैप पे होता है। सेकंड राउंड में कुछ और ऑप्शंस मिलती हैं, या तो आप इनमें से उन्हीं को रिटेन करते हो 1 राउंड और, या आप डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को लेना है या रिजेक्ट कर देते हो। जब 4th 5th राउंड पे आप चलते हो तो ईदर यू आर टू एक्सेप्ट और यू आर टू रिजेक्ट। अब यहां पे जब आप चलते हो तो क्या होता है, आपके पास कुछ अच्छी आईआईटी मिलना स्टार्ट होती है। जैसे आईआईटी इंदौर मिल गया, आईआईटी पटना मिल गया, आईआईटी पटना का मैकाट्रॉनिक्स मिल गया, आईआईटी बीएचयू का आपको प्रोडक्शन मिल गया, समथिंग लाइक दैट। एंड देन या तो आप उसको ले लो या आगे वो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, तो फिर आगे आपको चांस है मिले ना मिले।
तो फिर आप यहाँ पे रिस्क नहीं लेते। अब अगर आप रिस्क लेते चले गए, स्पॉट राउंड तक रिस्क लेते चले गए, तो शायद आपको आईआईटी बॉम्बे भी यहां पे मिल जाए। इफ यू कीप ऑन टेकिंग रिस्क, यू विल गेट आईआईटी बॉम्बे आल्सो। बट व्हाट हैपेंस इज only you can take risk if you have some option in hand. If you have some option in hand, then only you can take a risk, and that option can be MS or MTech research. It can be MTech research or MS, and that is the reason I tell all my students, because MTech and MS research is not through COPE, it is separately, ये separate होता है, and that is the reason I tell my students MTech research में अप्लाई करो, because जब यहाँ रिस्क लेना होगा, we will tell you reject it, so that we'll go to the 10th round. Best thing is in the 10th round or spot round. तो आप तभी कर पाओगे जब आपने हाथ में कुछ रखा है। अगर आपने हाथ में MTech रिसर्च या MS रखा है, तो आप रिस्क फ्रेंड्स ले सकते हो। रिस्क लोगे तो आपको बेस्ट ऑप्शंस यहां मिलेंगी, अदरवाइज आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। दैट इज द पॉइंट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, MTech रिसर्च और MS को साथ में ऑप्शन लेके चलना बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब मैं देख रहा हूं मेरे मेजॉरिटी MTech वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं बाद में, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए। वो आपको तभी मिलेंगी फुली फंडेड स्कॉलरशिप इफ यू आर you have done very good research work, and good research work or research publications can be through MS. So if you have decided to go for PhD abroad, तो MTech research या MS उठा लेना, वो चीज आप ले लेना IITs में अच्छे डिपार्टमेंट में, out of your own interest, and accordingly you can go it. Now, so that means कोप राउंड में जाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, that is how you have to do it. Now, एक आपका जो इंटरडिसिप्लिनरी है फ्रेंड्स, उसमें जरूर अप्लाई करना। इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट, interdisciplinary courses, high probability of selection in this, high probability of selection. अब ये क्या होते हैं? What are interdisciplinary departments? Interdisciplinary departments are like energy studies हो गया, या आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, या अर्थ साइंस हो गया, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई डोमेन हो गया। So these are interdisciplinary departments. The probability of selection is high, and इसमें भी अगर आप MTech research में अप्लाई करेंगे या MS के लिए अप्लाई करेंगे तो probability is even higher. And if you are from computer science background and your gate score is less, तो interdisciplinary में MTech research can be very good option जहां से आपको कॉल आएगा। And there are so many computer engineers who are working in the environmental domains, who are working in the earth science, climate science domains, geo graphics डिपार्टमेंट्स में वो ट्राई करते हैं। सो ऐसे से बहुत से जियोमेट्रिक्स वगैरह डोमेन्स हैं जहां पे आप अप्लाई करते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। सो दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच इज गुड। इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स, दैट इज वेयर यू हैव टू अप्लाई एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, बिकॉज इंटरव्यूज विल बी देयर एंड यू कैन गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यूज through these particular departments. So that is another option which is a good option for you, which you can convert it. Now, some exams like wherever you go, there will be written exam also. Will there be written exam? Will there be interview? Will there be both or none of these? Answer is there are some options where there is neither written exam nor there is an interview. लेकिन उन कोर्सेज में एंटर करने के लिए आपको गेट स्कोर हाई चाहिए, और अगर आपका गेट स्कोर बहुत हाई है तो आपको बिना रिटन और इंटरव्यू के शायद सिलेक्शन वहां पे हो जाए। लेकिन अगर गेट स्कोर आपका कम है तो आपको ऐसी जगह अप्लाई करना पड़ता है जहां पे रिटन एग्जाम होता है, जैसे सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ आईआईटी हैदराबाद, सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ आईआईटी जोधपुर, वहां पे आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम फॉलोड बाई इंटरव्यू। रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाता है? रिटन एग्जाम में दे आर गोइंग टू आस्क यू ओनली व्हाटएवर गेट में आपने किया है, प्लस मैथमेटिक्स दे विल आस्क यू, जो आपने पढ़ाई की है अपनी वो पूछेगा आपसे, गेट के लिए जो तैयारी की है। सो जो आपने गेट का प्रिपरेशन किया है उसको करते रहो। गेट प्रिपरेशन कीप ऑन डूइंग, आपको इसको बंद नहीं करना है। गेट की जो आप तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, उसको रोकना नहीं है, उस तैयारी को आप करते रहो, क्योंकि गेट की प्रिपरेशन आपको हेल्प करती है रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, रिटन एग्जाम को निकालने के लिए। तो गेट की एग्जाम की तैयारी आपने रोकनी नहीं है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते रहोगे, और उसी तरीके से आप रिटन एग्जाम निकालने के लिए वही प्रिपरेशन चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू मैंने आपको बताया बीटेक का प्रोजेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं,
और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही हो, ऐसा हो सकता है कोई भी इसमें इंटरव्यू ना हो. दिस ऑल द ऑप्शंस आर बेसिकली देयर फॉर यू. Now let me take some students question. They have asked some question. Let me handle that. SC electrical 7419. SC electrical. देखो IIT certainly you will get it. और मेरे को लगता है PSU में 2 या 3 PSU से कॉल आएगा. 2 to 3 PSU you will get it. Especially mini Ratna PSUs you will get the call. I remember that even DRDO called at 400 gate score in one of the branches in UR, not SC, in UR only called. So yes, we will keep on telling you which PSU will basically call you at this gate score. तो आप YourPedia के साथ जुड़े हैं, you are connected with YourPedia. Whenever some PSU will release its forms, and our website, if you go, already we have mentioned that which PSUs have already come. So we have kept that information there. So you can apply on those PSU. Will tell you that whether you can get the call into call or not. Electronics 605. Okay, electronics 605, ECE 605 gate score. Yes, PSU as well as IITs. Now which IIT, which course and which PSU depends upon कौन सा PSU का फॉर्म आया है, तो वहां पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं और आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, मेंटर विल गाइड यू. सो आई कैन नॉट जर्नलाइज दैट which PSU as of now. Let the PSU come. The moment some PSUs come, we'll release. Always we say, okay, this PSU has come, आप इसमें apply कर सकते हैं. Which courses? Yes, one of the best courses also you can get it. But if you tell me about your CGPA also, so I can tell you that even IIT Bombay में you can think of getting at this particular gate score. Right? So for this, I think 460 computer science general category. Now Nitish Sharma 560 CS 8.65. See this 560. You are saying computer science gate score 560, that is your gate score, and 8.5 your CGPA, and you are UR. MTech research or MS is certainly you should apply in old IITs, in computer science departments and all. But if you want to apply for MTech in old IITs, also apply in interdisciplinary departments where computer science students are eligible. Like IIT Bombay you want to apply, IIT Delhi you want to apply, so computer science department mein, MTech research mein certainly you apply. But in the new generation IITs like IIT Mandi or IIT Patna, where there's a AI department, artificial intelligence department, you can apply that also. Like computing and Center for Computing and Electrical Engineering, SCEE. There is a department in IIT Mandi. So you can think of applying in MTech course in that. I mean, you will get it. In the new IITs, you will certainly get it. Old IITs, MTech research, you will get it. Old IITs, interdisciplinary department, you can apply in the interdisciplinary department for MTech program also and MTech research program also. Because your CGPA is good, your gate score is above average. I'll not say high gate score is 600 plus, but this is above average gate score. So you can apply for these particular courses there. 561 rank electrical engineering 7.89. So that is, I think Shrey is saying 561, that is the gate score electrical engineering. I think this is Shrey 561, and you are having 7.89 CGPA. So you have not told me what is your category. I am presuming it to be general category. Again, old IITs, MTech and MTech research, both courses of your core branch. But certainly your core branch will be electrical engineering department. But you should also think of applying in energy science department kind of courses. They are the interdisciplinary courses for you, but you should try to apply for those courses. They are interdisciplinary, but certainly you should think of applying in that. Now, this, okay, Abhishek Joshi, gate score is 482, and DA में 482 DA 7.5, open branches, okay, data science and AI 7.5 482,
482 गेट स्कोर, 7.5 CGPA, गेट DA. New IITs MTech, old IITs MTech research. Old IITs interdisciplinary MTech, new IITs MTech and MTech research. New IITs MTech and MTech research in data science related departments. Old IITs MTech research in data science department and interdisciplinary department. Let's say earth science भी आपको permit कर रहा है, तो वहां पे you can apply for MTech in old IITs. You have to go till spot round, last round, under the mentorship of YourPedia mentors. They will tell you, and you keep on going there. Now, let me tell you, friends, where YourPedia mentors are going to help you. How YourPedia helps you, guides you. In fact, I'll tell Gurvinder sir again to explain that to you, but let me tell you that each individual has his own requirement. Each individual has his own requirements. That means same thing cannot be suggested to everyone, because your CGPA is different, your gate score is different, your interest is different, your strength is different, your weakness is different. So every individual has got his own requirement. Some of you will say, I want to do MTech because placement. Somebody will say, I want to do MTech because of higher education abroad. I want to do MTech because I want to just have a platform जहां मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकूं. तो मेंटर आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे, योर ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, मेंटर्स विल सजेस्ट यू वेयर टू अप्लाई. तो YourPedia आपको क्या बताता है? वेयर टू अप्लाई. वेयर टू अप्लाई मींस MTech या MS या आपका डायरेक्ट PhD. वेयर टू अप्लाई. हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स? Now each IIT has many departments. So mentors will tell you in each IIT how many departments you should apply. ऐसा नहीं हर एप्लीकेशन 500 रुपए लग रहा है तो ऐसा नहीं 10,000 रुपए आप एक ही IIT पे खर्च दोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो कितनी जगह अप्लाई करना है. फिर CV चाहिए, SOP चाहिए, वो आपको YourPedia के मेंटर गाइड करेंगे. CV, SOP एंड इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है. आप जानते हैं YourPedia is the largest platform where you can prepare for any kind of interview. तो CV की तैयारी, SOP की तैयारी और इंटरव्यू गाइडेंस की तैयारी अकॉर्डिंगली YourPedia मेंटर्स आपको सजेस्ट करेंगे आपने कैसे करनी है. उसके बाद कोप राउंड के अंदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का डिसीजन में YourPedia mentors will help you. Where to apply, how many departments to apply and how to apply. हाउ टू अप्लाई ऑल्सो. एप्लीकेशन में भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो YourPedia के मेंटर्स आपको हर स्टेज पे हेल्प करते हैं. पहले तो बताएंगे अप्लाई कैसे, कहां पे करना है. भाई इन 4 डिपार्टमेंट्स में डाल दो. अच्छा सर इनमें CV चाहिए, SOP चाहिए, ठीक है हम देते हैं. अप्लाई कैसे करना है सर? ऐसे करना है. अब कोप में सर रिजल्ट जो आपका आएगा, रिजल्ट वो कोप में आएगा, तो कोप में आपको स्पॉट राउंड तक ले जाने के लिए मेंटर चाहिए. अदरवाइज आप वहां पे नहीं जा पाते हो, आप रिस्क नहीं ले पाते हो, आप डिसीजन सही ले नहीं पाते हो. तो डिसीजन मेकिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, एंड डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प चाहिए होती है मेंटर की. मेंटर ओनली विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग. लास्ट में CV, SOP, इंटरव्यू प्रिपरेशन, all these things are very very important and you are to basically work on these things. So friends, I tell you this entire process is of a couple of, I'll say couple of months. अभी आपका ये 15 अगस्त तक तो आपका 15 जुलाई 15 अगस्त तक तो आपका समर इंटर्नशिप चलता है. उसके बाद विंटर इंटर्नशिप आपका चल पड़ता है, विंटर एडमिशन जो अक्टूबर से चलता है. अक्टूबर के बाद आपका विंटर का स्टार्ट हो जाता है, तो विंटर में भी आप अप्लाई कर सकते हो. मैं आपको सबको ये एडवाइस करूंगा कि आपने किसी ने ब्रेक नहीं लेना है, आपने किसी ने गैप नहीं लेना है, ड्रॉप नहीं करना है. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. नाउ आई विल रिक्वेस्ट गुरविंदर सर एट द एंड टू टेल यू how YourPedia guidance works. Let me tell all of you who are listening to me carefully how YourPedia guides you. Where it guides you is each mentor has, each candidate student has his own requirement. Mentor will be allotted to you and mentor will tell you where to apply in one particular institute, how many places to apply, apply करना कैसे है, CV, SOP और वो सारे के सारा कैसे चाहिए, तैयारी कैसे करनी है, कोप राउंड में कैसे सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, एंड तक चलते रहोगे.
समर्स एंड विंटर दोनों में हैंड होल्डिंग के लिए we mentors are there for you. So if you have got gate score or no gate score, and if you are looking for opportunities, let's join friends. We are opening our post gate guidance now. So today or tomorrow we are going to interact with each one of you who come on board. Now Gurinder sir will take this forward and discuss with you how you can access and how you can take the benefit of YourPedia. Thank you. So now how you have to proceed for this? Very simple. First of all, you have to go to the link on the website. The link is also available in the description of the video. You just go there, in the postgate counseling page is there, or you can directly go to the website also, yourpedia.in. At yourpedia.in, in find the course postgate counseling page is there. So go to that postgate counseling page, and there you will find the three options over there. First one is your if you have gate qualified, then join to the package number 1. If you are not gate qualified, then join to the package number 2. And if your gate score is very, very good and you are looking for to prepare for both for the higher studies program, means for the PGC program, and second, if you want to go for the explore the public sector options also. So till 31st March 2027, this PSU plus PGC module will be open. So this module, if any, because there are so many students who join for that 1 year comprehensive module for the interview, group discussion, group task preparation. So my advice to you that if your score is very good and looking for the public sector opportunities also along with the higher studies, then go for that package number 3 over there, and otherwise package number 1. And package number 1, if you're gate qualified but still your gate score is low, then if you want to explore the without gate opportunities also, that part is also included in that module. Although I will make a dedicated separate video also related to the what all packages are available on the YourPedia website. Otherwise, this is continuously from the last 10 years, YourPedia is doing that for the postgate, and everybody are aware about the YourPedia postgate guidance module. And I don't think that you will be having any queries with this thing. Yes, definitely queries will be there related to what are your opportunities. Repeating again, which I already told you in the beginning, that all of you are having the multiple opportunities, but the very first step is the most important step, that where you apply, you have to apply at right place with the right combination. Combination matters. This is a whole game about the for the next 4 to 5 months. And if you made this process wrong, the very first step, wrong combinations, you will not get multiple opportunities, or you may lose very good opportunities, which maybe you don't have the awareness that what type of placements are over there, right? What are the opportunities, future opportunities over there? So I want to go for the placement after the masters, or I want to go for the, let us suppose, PhD abroad. So many things are there. So that mentors keep on discussing with you. With Dr. Vijayendra also, you will be having the daily interactions on the Zoom. So this is about the YourPedia postgate. You can go there. I think in the when we started this process till now, already so many candidates have already joined this postgate. In fact, when we launched this module, I think 1 week ago, from that only so many candidates have already joined for that. So you can go there. How this process works, let me tell you for that. Daily you will be having the Zoom interaction with the mentors. Daily you will be having the Zoom interactions with the mentors. Now divide it into the different stages. The very first stage that you will be want to know about according to your credentials, with which IIT, with which combination you should apply. So mentor will take your sessions, although there will be group, but one by one, individually one by one, mentor will keep on telling each and every student that according to your credentials, with which combination you should apply for any particular IIT or IC Bangalore, they will keep on telling you. And I think IC Bangalore last date is I think 23rd of March. So don't delay. Today is 19th March, and tomorrow we are starting taking the Zoom sessions, live sessions for that, along with you who have already joined for that. I will also take some free sessions on the Zoom. I will drop some messages in the WhatsApp group also. There you will come on the Zoom. There also you can ask your queries before joining the YourPedia postgate. That also you can do that. And still, if you have any hairy query related to this postgate, you can ask me. So what to do if results are withheld? You can wait. There are so many candidates who have got this message over there when you are logging on your portal. Yes, some messages are coming over there that you can wait. You can wait and you can mail to that particular IT zone wise also that okay, this message is coming over there. Soon they will release the result for that also, right? So ending by saying this thing only, whatever credentials you are having, all of you are having the opportunities, but
if you utilize those credentials very well with the guidance of the mentors, with the best team of the mentors, YourPedia, then you will be having the multiple opportunities, multiple selections in the hand, so that in the end you will be having the options to choose. To choose, sir, I'm having these 4 selections. Which one I choose? So this is last step. Repeating again, don't make the blunder by at the very beginning by putting the constraints. I want this, I do not want this. Don't put this constraint. Come with the guidance of the mentors with the post gate, then you will get one by one, step by step for the next 4 to 5 minutes. This is not a process of 3-4 minutes or 5-10 minutes or half an hour where everybody will tell you that how you proceed for the next 4 to 5 months. This is a long process. This is a long journey, 4 to 5 months. And if you're not satisfied with your selection in the summer session, then winter session is also there. In the winter also, you will get multiple opportunities for MS program, for direct PhD programs, or PhD after master program. In the winter also this come. And whosoever join this summer post-gate counseling, winter counseling is that complementary part of that. You will also get the guidance in the winter also, right? Anything else you want to ask before we end this session? Gate score 448, mechanical 8.39 CGPA. You didn't mention unreserved. Multiple opportunities, SSZ 7600. Multiple options will be having, you will be having, especially for the MS program. Join to YourPedia postgate and start taking the session with the mentors, right? So I think I should end this session. Can you show in the digital board the modules? Yes, I can show. Yes, I can show that. So this is YourPedia website. So this banner is coming there. If you directly click on that, you will be redirected to the YourPedia postgate counseling page. India, abroad, PSU, MTech, MS, all options are there. So this is the page you visit. All options are there. So this is all you are going to get in this particular module of postgate counseling. Components of postgate counseling. This everything you are going to get in this. So you can go through that awareness, where you apply, how you apply, how many institutes to apply. Last date, information about the last date. Normally you miss this thing. New courses, which are the new courses being started by the various IITs. Eligibility criteria. Sir, my CGPA is 6.49. Should I apply? Am I eligible for that or not? Written exam guidance. In IC Bangalore, there are so many departments who will conduct their written examination. For direct PhD program, for MS program, somewhere you will make the written. So what is the syllabus for that? How we should prepare for that? Mentors are going to guide you for that. After that, tests, preparation for the interviews. All MS programs, MTech research program and direct PhD program and IC Bangalore, or majority of the programs for MTech program also, you have to face the interviews. Group discussion, IC Bangalore, this Master of Management, you have to face the group discussion. So GD preparation, this interviews preparation is part of this module. Project report guidance, because this is very, very important, especially for the research program. In the interview, they ask about that. Form filling video, each and every IT is wise. CV portfolio in IT Hyderabad, you will be requiring the portfolio CVs. Dedicated WhatsApp groups are there. Regular Zoom interaction with the mentors. On the daily basis, we will be having the regular Zoom interaction with the mentors. With some of the old students, definitely yes, we will interact with some of the old students who are already sitting in particular IT. Then this is the winter counseling is also included in complementary part. GRE, TOEFL, IELTS, if you are joining the abroad module in that. So these are the various modules, various packages in this module. So this is a module. If you are GATE qualified, if you are looking for the MTech option, MS option, direct PhD options, MTech to PhD option, IUR, Masters of Management, Department of Engineering Studies. So this is the module number 1 if you are GATE qualified. If you are not GATE qualified, then you can join to this option. And this non-GATE qualified option is also included in this. It is also, I think, mentioned there. Non-GATE options included means package number 2 is automatically included in this package number 1. And this is the module number 3. This PSU plus PGC, if your GATE score is very good, and if you are looking for the this public sector plus higher studies guidance both for 1 year, because it will be valid till 31st of March 2026. No limit to the GD sessions, no limit to the GT sessions, no limit to the number of interviews.
this is the best module for you, because the charges for only interview module for 1 year, that is 7500, right? Here it is 8555, and this is the combination of this. So this module plus 7500. So this is the your module where you will get options for higher studies as well as for the public sector. So this is the package number 3. You can join accordingly, right? Any other query? If you can ask me. यस विद होल्ड आ रहा है, कईयों का आ रहा है विद होल्ड का, आप उनको मेल कर दीजिए, सो डेफिनेटली यू विल गेट सम रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर. So this is about all the modules. So team is there who are going to guide you for this postgate program for 2000 this 26 admissions, 26-27 admissions for master's program, for MTech program, for MTech research program, MS program, direct PhD programs. Abroad opportunities are also there. If you want to go for the abroad options also you want to explore, then join directly to the abroad modules from YourPediaGlobal.com. From there you can directly join. And if you're joining the YourPedia Global, means abroad module, then Indian module is complimentary added in that. So you need not to pay for this thing if you are joining for the YourPedia Global module, abroad opportunities module for that. Right? Electrical SC 35 marks, rank 434. Where I can get VLSI? Jordan, I think I already answered you this thing. I already answered you earlier about this. Sir, 15 scoring gate possibilities, self-sponsored, quantizing things. Self-sponsored you have to explore. And then Akash Kumar, 650, SC, CSC, CGPA 6.7. Multiple opportunities will be there, Akash. Multiple opportunities will be having. In the end, you will be having the multiple selections in your hand. You have to listen to Mukesh sir. Mukesh sir will guide you how to utilize this score. How to utilize this score. Right? So I think a majority of your queries has been covered. So now, if any one of you want to further discuss about anything, still if you're having any query, you can contact us directly. Website, the contact number is available over there. You can contact us. Otherwise, you can also fill the Google form, which is available in the description of the video. You can fill that Google form also. Or otherwise, you just go directly to this page and directly join. And from tomorrow, we are starting the live sessions, Zoom session with the mentors, right? So this is from my side. So in the chat box, in the comment section also, after this end of this session, in the comment section also, you can put your query over there, right? So thank you and all the best to all of you for this post-gate guidance sessions. Thank you.